Okay, so I guess so. Okay, guys, so we are live now. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Okay, so this is Taiba Farza, Senior HR Specialist from InvoZone, and I hope you are doing well. It's a pleasure to have you here today. Honestly, we are going to be discussing about how 2020 has been a challenging year so far for all of us. We all know it didn't only affected our personal lives, but our professional lives as well. Like our businesses were impacted, our companies were impacted, and we are having this session today to discuss the overall impact of 2020, as in what challenges the business world had to go through. Our webinar would be focusing on what strategies were adopted by firms for overcoming these challenges, which of these strategies worked well for them, which were unsuccessful at that point, and to make it clear for everyone, हमारा जो medium of communication है, that is going to be English and Urdu both. We are going to be sharing ideas. हम लोग अपने challenges के बारे में बताएंगे. हमने किस तरह से वर्क फ्रॉम होम को मैनेज किया, हमने किस तरह से टास्क एलोकेशंस को मैनेज किया, टास्क मैनेज कैसे किए, टीम्स कैसे मैनेज की व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग. एंड पोस्ट द लॉकडाउन जब हम लोग ने रिज्यूम किया है, बहुत सारे ऑफिस ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, हाउ दे डेल्ट विद दैट, द सैनिटाइजेशन ऑफ द ऑफिसेज, द टीम मैनेजमेंट, किस तरह से बिठाना है, डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग. वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दैट. बट okay, but before moving further, I would like to tell you something about our company, InvoZone. मैं थोड़ा सा brief description हमारी company का दूंगी, and then we'll be moving forward towards the webinar, right? Okay. So basically, InvoZone is a Canadian-based company with offices in Ontario, Kuala Lumpur, and Lahore. We are working with almost like nearly 150 plus employees at the moment. In diverse tech stacks, हमारे जो mostly काम हो रहा है वो मीन में, मन स्टैक में, लेक्सर में और ERLand में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं. जो हमारा की सेक्टर्स है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं,
These are e-commerce platforms, cryptography, travel business applications, intra-messaging apps, home-based services, healthcare apps. We are trying to cater all these. But जो हमारा tech stack है, as I told you, हमारा कुछ जो हमारे तो main unique selling points हैं, like the Elixir, Phoenix, and Erlang, हम इसके ऊपर ज़्यादा focus कर रहे हैं. Okay. So moving further, guys, in this session, we have Mr. Hassan Raza with me here, the founder of Pep Talk. He has more than 16 years of industry experience and he is going to be moderating this session with us. He is currently head of HR at Emerald Labs as well. So Hassan, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Thank you very much, Filza, for the great introduction. And by the way, I am super excited today. And credit goes to InvoZone कि इतने जबरदस्त प्रोफेशनल्स को इकट्ठा किया है आज, जो एक्सट्रीमली रेलेवेंट टॉपिक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो क्रेडिट गोज टू यू InvoZone, ग्रेट वर्क, जबरदस्त. By the way, जैसे कि मैंने बताया कि I'm pretty much excited. Let me give a brief introduction about myself. Mr. Filza ने भी बताया, I have total 16 years working experience in the field of HR. I have worked with different sectors. I have worked with different companies like Service Sales Corporation, Bell City School, Elan, Maria B. So from last 2 years, I am working with Emerald Lab, and I really love my job, and I am enjoying it. Working in the capacity of head of HR, और तकरीबन 1 साल पहले जब कोविड आया तो मैंने सोचा यार कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो कि कम्युनिटी के लिए हेल्प और सपोर्ट कर सके. एक आइडिया ज़हन में आया और वो था पेप टॉक पाकिस्तान को लॉन्च करने का. मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था पेप टॉक पाकिस्तान को बनाने का वो ये था कि ऐसा कंटेंट, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो है वो उसके ऊपर बात कीजिए जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, फोर्स टर्मिनेशन पे लोग बात करना पसंद नहीं करते. मैंने डिफरेंट गेस्ट को बुला के उसके ऊपर वेबिनार्स किए. ऑफिस पॉलिटिक्स पे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, उसके ऊपर हमने जो है डिस्कशंस की. वन ऑफ द ग्रेट माय मेंटर इज शी इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर एचआर एट ब्रिटिश काउंसिल, सबाहत के साथ. ठीक है, उनकी बात करते हैं. ऑफ बोर्डिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज की, उसकी बात नहीं. उस ऊपर भी मैंने डिस्कशन की. हम लोगों ने डिफरेंट केस को बुला के जो है उसके बाद तो अल्लाह ने बड़ा करम किया. अल्हम्दुलिल्लाह सीईओस के भी इंटरव्यूज किए, एचआर प्रोफेशनल्स के भी. तो फिर एक के दो, वो अल्लाह ताला का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम रहा. तो अल्लाह का शुक्र है. तो ऑल दो तीन सेक्शन जो है वो प्लान होते हैं. सो आज जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, एंड दैट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट टुडेस an extremely relevant topic, headhunting and managing workforce amid the pandemic. I think all of us as an HR professional and as a business leader the model and in a people strategy, and there is an immediate need to support our employee and today business. I hope that my voice is audible, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इंटरनेट का इशू है. Exactly. Yeah. Okay. Great. So let me continue. In this webinar, what we want how this new normal in the future will be defined. So what will be the role that each one as an HR and business leader help the organization to be ready. So now I have to introduce our guests. As I already shared with you that I am super duper excited about today's session. So मैं कोशिश करूंगा कि सब का इंट्रोडक्शन जो है वो सी, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने अभी स्किप किया है. So we'll add. So first I would like to introduce the great person. You know, when we talk about cricket, आपके ज़हन में नाम आता है इमरान खान. When we talk about tennis, तो आपके ज़हन में नाम आता है रॉजर फेडरर. When we talk about टेक इन पाकिस्तान और टेक की ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन को
ट्रांसफॉर्म करना, तो आपके जहन में नाम आता है one and only the great Fizan Mehud. Fizan, welcome on today's show. Thank you. Assalamualaikum, everyone. Listen, that was a very, I think, exaggerated introduction, but thank you for that. So basically, my name is Fizan, and I've been active in the entrepreneurship domain from quite some years now. I've been the pioneer in stepping the entrepreneurship ecosystem in the country, and some of you might be familiar with the brand name called Plan9. I was heading that, and then I worked with the Punjab IT board to bring IT reforms in the province. And many of those who are living in Lahore specifically can see all the Safe Cities initiative and all the digitization of land record, etc. So that was done by Punjab IT board, and I played a vital role in that. And besides that, I have two companies. One is called Capital Stake, which provides analytics to the stock exchange of Pakistan. So all the leading brokerage houses use our software for stocks trading. और उसके साथ साथ the other company that I am actively running right now is called Emerald Labs. So we initiated this company back in 2018 with the concept of establishing remote teams across the world. So it was a fairly new concept, encouraging people to focus on remote working back in 2018. But then when the pandemic hit and the entire world went remote, it became very easy for us to sell our product and our services to our clients. So our company is based out of the US. So we're 4 partners in total. 3 of them are in the US. I'm over here in Pakistan, and I'm taking care of all the operations of Emerald Labs. So basically what we do is that we establish remote teams for international clients. We tell them that instead of hiring in the countries that they're operating in, which are super expensive, like the US, UK, Canada, etc., or first world countries, so we tell them consider Pakistan as your branch office, and we manage everything for you. So that's what Emerald Lab does, and that's a brief introduction of myself and Emerald Lab. Great, wonderful. Thank you very much, Fizan. Fizan is currently working as a COO at Emerald Labs. He manages talent management, performance management, HR, marketing, progress monitoring, and evaluation. Also a co-founder of Capital Stake that he has already shared. He has worked with Superior Group in the capacity of journal manager innovation. He likes reading books on Sundays and playing tennis. By the way, he is always advising me that, Hassan bhai, you should read books on monthly basis, and he keep asking me that what is, have you really read that? And we had a quiz on a weekly basis, and he all the time he deduct my marks. and anyway, so we'll move to another guest, and let me introduce Bilal Masood is not available. He didn't join us. Okay. So keep tracking से हमें join किया है Ahmed है. Hi Ahmed, thank you very much for joining us today. So we'd like to ask you to please give a brief introduction of yours. Please go ahead. Hey Hassan, thank you so much everyone. Thank you so much for having me on this call. Super excited to be here to talk about how everyone and companies have dealt with 2020. I believe that was quite the year for everyone. So super excited. As far as my introduction goes, so I'm working at Keep Trucking for the last 2 years. Started as a recruiter. I'm currently getting the entire sales recruiting org here at Keep Trucking for PK. Been in the industry for about 4 to 5 years now. Worked in different sectors, engineering, Descon, logistics, and Razik. Been in the BPO sector for quite some time. We're working Mindbridge for a while. So yeah, I'm sort of glad you when you want to mass hire. Great. So happy to bring all of that on this call. Sorry, Hassan, I didn't mean to cut you there. Great. We are all already excited, and by the way, बहुत सारे questions हैं, and we'd like to ask from everyone. और अहमद आपके लिए भी Keep Trucking के लिए भी हम लोगों ने कुछ questions जो थे वो बना के रखे थे. Definitely love to have your answer on it. Okay. Thanks, Hassan.
Great. Okay जी. अब अगले जो हमारी जो गेस्ट है, her name is सईदा तकदीस, HR मैनेजर है माइनर बाग्स में. सईदा likes following new about multinational including Tesla and General Electric. So over to you, Saida. Can you please give a brief introduction of this? She actually left. Just give me a second. I think she's not with us. She अभी joining. अभी join किया था उन्होंने, करम चला गया था. Okay. Let me introduce. Okay. Let me introduce next speaker. And you know, she is such a great HR professional and a very good friend of mine and very good colleague as well. She is having a networking skill, and her name is Saira Ali. Saira Ali is working as the HR manager at EcoLogics. Saira, welcome on today's show. Saira, Okay. please. Yeah. Yes, it's Yeah. well, so much Hasan. Such a great introduction. वैसे शायद मैं इतनी काबिल हूँ नहीं जितना आपने मुझे बना दिया. But thank you so much for your words. And hello everyone. This is Saira Ali. I have almost 11 years of experience in my field, HR. Right now I'm heading HR department of EcoLogics. That's basically a US-based company. यहाँ पर इस कंपनी को हेड करते हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं. But that situation was not that much of affected on my organization because हम लोगों ने सिर्फ 22 days का कॉन्ट्रैक्ट किया था. And after that we actually joined our office with the special commissions and all. Reason was my CEO was in US and he was thinking कि जी अगर यहाँ पर मेरे इतने operations हो रहे हैं, so that should be beneficial for me. Luckily my company is one of those companies जिन्होंने कोई pay cut या कोई भी layoffs वगैरह जो है वो नहीं किया. Alhamdulillah, I'm that kind of a person and I'm having that kind of a fate as well. But for that kind of thing and that kind of a stuff, we have to make our office open. जैसे कि start में दीपा ने बताया, फिजा ने सॉरी कि इसमें हम ये भी discuss करेंगे कि how would we start our office, क्या precautionary measures हमें लेने पड़े, and then what was the gap differences and all. But yes, we actually adopted all the things, all the stuffs, all the precautionary measures in our office. Lekin the thing is कि हमारा quarantine बहुत short time and are open in the market since 15th of April 2020. Great, wonderful. Thank you very much, Saira. Okay, the next thing is that Ittisam Arshad, he is working as the CEO Al Mohsi Group. Hi Ittisam, are you with us? Yes, Assalamu alaikum, Hasan. How are you? Alhamdulillah, perfectly fine. Would like to introduce yourself, please? Go ahead. Okay. As you know, my name is Assam Arshad. My name is Assam Arshad, and I'm not as IT professional as you are. I have only 2 years experience in this industry. I graduated in 2018, and now I'm currently a student also. I'm doing MPhil, and I started my company way back in 2019. Okay, and as you can say, we basically work on ERP, e-commerce sites, and portals, e-learning, like models for universities. We are currently working on that. Great, wonderful. And Ittisam, we're looking forward for your active participation. Okay, thank you. Thank you. Great. So the next guest is that Usama Shahid. Usama is with us? No, I think that he is not here. Okay. I can't see him. Okay, let me introduce another guest, and I think that he's such a seasoned professional. I have read his posts on LinkedIn. He is very well active on social media. Great inspiration. और वो कहते हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, ये वो वाले मेरे गेस्ट हैं. Let me introduce, and his name is Furqanur Rahman. Furqanur Rahman is working as a co-founder and director, Sport Ages Australia में होते हैं. ये previously marketing coordinator Real Serious Games में काम कर रहे हैं. So Furqan, thank you very much for joining us today. Thanks, Hasan, for the kind introduction. Just before, obviously, I introduce myself, I would like to give a big shout out to the InvoZone team
for putting this great initiative together, which is very much needed, especially in the very relevant to this current scenario and what's going around. And also pleased to be obviously included in this great cohort of speakers who are well educated and well knowledgeable from different fields. So yeah, Furkan, my name is Furkan Rahman, obviously, and I'm one of the co-founders and directors at SportAgeus. So we're basically a sports media platform based out of Australia, working from Canberra and Brisbane, and we began operations not too long ago in July 2019. Originally started off as a blog, and before turning on to becoming a full-time business. And then our mission is to create an ecosystem of healthy sporting debate, which is free of memes and rumors and prejudices, obviously. So I guess it's also important to know our story and why we began this. So we basically started off as four friends, an idea of combination of four friends who saw this great gap in the industry where the content that was produced wasn't meaningful for sports. And there was a lot of rumor-based commentary. Things like you would see on the internet, Virat Kohli versus Babar Azam, Messi versus Ronaldo, all of that, which wasn't really feeding the appetite of the actual sports fanatics. And we thought, we'll just go ahead and we'll challenge the status quo of mainstream sports media. So we began SportAgeus with no intention of whatsoever of starting a business, but with the great overwhelming response we received in a short amount of time, we decided we'll just take things ahead. And so far, we've published in a short amount of time more over 300 published articles, got over a combined 20K followers. Our story has been featured in SBS Urdu, which if you most of you may not know is an Australian Urdu media platform. And then our primary market is obviously the subcontinent because I'm a Pakistani Australian, so our background, most of us are Pakistani. And then Anglosphere region, so Australia, obviously New Zealand, UK and US. And we have a different number of products from the SportAgeus card, which is in audio and video. And we're also hosting one of the Australia's first completely virtual global squash conference called the Squash Summit 2021. I encourage everyone to join it. You could just go into our website, thesquashsummit.com, and join us. It's a completely free event to join, and very convenient times for Pakistan as well. And also on the side, we're running this sports media consultancy as well. And we cover basically 5 major sports. So the 2 of them being knee sports, squash and climbing, and also cricket, obviously, because we're from Pakistani background, and then football and tennis. And the reason we've picked up tennis is because of it's taking the game forward in terms of addressing that pay parity issues that unfortunately has always existed in sports. And we're trying to change all of that prejudices that are currently present in the market. And we're partnered with a couple of great companies and organizations across the globe. So Squash Australia, Sport Climbing Australia, Magna Sports from Pakistan, Blinder from New Zealand, and Bullpen from Western Australia. So thanks again for inviting, and really looking forward to the conversation. Great. And literally, Furkan, आप जैसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का रियल टाइम फेस है, और आप जैसे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. क्रेडिट गोस टू यू गाइस, वंडरफुल जॉब. बाय द वे, जिस तरह इंट्रोडक्शन चल रहा है और जो मैं कहता हूँ कि हमने जो स्टार्स इकट्ठे कर लिए हैं, आई एम डैम श्योर दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी interactive session and very useful session for everyone. So please हमें join करें InvoZone के Facebook के page पे, YouTube पे. Are we live on LinkedIn, Finza? Yes, we are. Okay, We are great. live on LinkedIn, Facebook, and YouTube. Great, wonderful. Okay जी. By the way, InvoZone की टीम ने बहुत मेहनत की है, रात को 3-3, 4-4 बजे भी जाग के, क्योंकि my follow-ups is very very strong. तो 3-3, 4-4 बजे भी जब इनको ये काम का इन्होंने फौरन करके दिया. Credit goes to Nail, Nabi, Fizza and Saad. वो definitely will discuss in the end section. Okay जी. Next guest जो हमारे हैं, and his name is Uzair Iqbal. Uzair is working as business development executive with Saudi Engineering Group Internationals. Uzair, welcome on today's show.
Thank you so much, Hassan, for such a humbling introduction. First of all, good morning, good afternoon, and good evening to everyone wherever you are. It is an utmost privilege for me to be the part of such an extemporaneous webinar, because there are top-notch professionals here and they are sharing their invaluable experience with us. I am here not in the capacity of an expert, I am here at the capacity of a student. I am here to learn everything. Coming towards my brief introduction, my name is Uzair Iqbal, belongs from Pakistan. I am here in Saudi Arabia, Eastern Province, which is enriched of oil. I am working here in Saudi Engineering Group International as a business development executive. We are providing our products and services to the biggest oil producer of the world, Saudi Aramco. We are providing them oil field support services. We have a safety business steward, and we are providing end-to-end solutions to the Saudi Aramco, to the contractors, subcontractors, and to all the mainstream channel partners of Saudi Aramco, which are helping them in their processes and industrial automation. I am here to share my thoughts. I am a student of University of Central Punjab, Lahore, had done my MBA in supply chain management and marketing. Thank you so much, and back to you. Great, wonderful. So the next guest is that Hassan Ajmal. Hassan is working as the performance executive as Econ Communication, Sydney, Australia. Hassan, welcome on today's show. Hassan, my voice is audible. Can you hear me? Oh, I'm facing internet issues. Your voice is audible actually, but with distortion आदत है तुम्हें. Internet का मसला. Okay, Hassan. Hello. Hi, welcome on today's show. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for inviting me to this webinar. Really appreciate it. Just to begin with my introduction, so basically I'm from Pakistan, based here in Australia. So I've been working in the digital space for more than 4 to 5 years now in Australia. Currently I'm working for Icon Communications, which is part of WPP, which is one of the big 4 ad companies in the whole world. So basically we are a full service ad agency, and I work in the digital department, which looks after all the performance activity which involves programmatic, social, and SEM activities, which is part of search. So we work across different iconic brands of Australia. Last year I ran a campaign for BPay, which is electronic bill payment system in Australia. That particular ad, from that particular campaign, was recently nominated as one of the top 10 leaderboard ads in Australia and New Zealand. And recently, we have seen a great boom in the digital space, and things have changed drastically during this pandemic in terms of digital landscape, employee management, and workforce. So really looking forward for a great interaction moving forward. Great, wonderful, wonderful. And welcome on today's show. Great. Thank Okay, you. Saida Shah जो है हमारे साथ, उनका introduction हो गया था. So Saida, you are not with us, so would you like to Yes. give, please? Assalamualaikum everyone. How are you? Perfectly fine. I'm Saida Taqdees Bukhari. I work as an HR manager at Minor Bugs. Minor Bugs is a gaming studio. We make Android and iOS games. So, how are you all? All is well. All is well. Thank you very much, Saida, for joining us today's show. Okay. Looking forward for your active participation. Okay जी, the last में जो कि हमारे जो hero और organizer हैं इस पूरे InvoZone, आइडिया जो आया कहाँ से, आज हम बात करते हैं उनसे, और वो है CEO, the great, the one and only फुरकान भाई. फुरकान भाई, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबको इकट्ठा कर देगा आज, और credit goes to you, your team. I mean, you amazing and super, but जबरदस्त coordination rates. तो सबसे पहले आपका introduction, I would like to know that ये idea आया कैसे इस webinar को करने का? Welcome, Sam, Hassan bhai. Thank you so much for your absolutely amazing introduction. Hopefully, मैं audible हूँ for everyone. Yeah. अच्छा, situation ये हुई कि you guys might notice that leadership ने एक बहुत बड़ा flip खाया, जैसे कि ये हमारा जो pandemic जो है ये
तो अब जो लीडर्स हैं इस वक्त अगर मैं कहूँ तो वो HR के लोग हैं, ना कि CEO, CTO and COO guys. Why? Because everyone is consulting from the management side. Everyone is consulting with the HR people, asking them how to cut the cost without like laying off the people. And what should our planning? What should our what will be our like next strategy in Europe? तो लाइक जब अगर हम आप देखें तो हर चीज जो है वो सराउंड कर रही है HR पर्सनल्स के अराउंड ही। तो जैसे कि HR जो है वो बताएंगे हमें कि अच्छा हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फिर एक और एक बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस होना शुरू हो गई जब रिमोट गए हम। लाइक ऑफ कोर्स क्वारंटीन वाज अ काइंड ऑफ मस्ट ताकि स्प्रेड आउट को रिड्यूस किया जा सके, रिजॉल्व किया जा कम से कम किया जा सके। तो जब हम वर्क from home there remote and always like remote working comes with its own cost and productivity issues as well. तो वहाँ पे फिर अगेन HR के लोग ही जो है वो स्टेप 1 पे थे, फर्स्ट फुट पे थे टू cope up many problems जो कि एम्प्लॉइज को भी आ रही थी और मैनेजमेंट को भी आ रही थी. They were playing a very like a marvelous bridge between both parties. So we decided, okay, like bring them all together on one platform one day and like and share exchange ideas like how you did this and how you handle the situation. And like of course you might have done something different from us or हमने कुछ और किया हो and you got better results and you got better outcome. So but if you share that with us and we also like might be moving forward, we also like keep those things in our mind and then like might be active with those as well. And thank you so much, Hassan, for your great coordination again. Like we will talk about that at the end again once again. So and everyone else who is here on this platform, looking forward to have to learn a lot from every one of you. Great, wonderful. Thank you very much, Furqan bhai, for giving us an opportunity. सबको मिलाने का और सबको इकट्ठा करने का credit goes to you. Thank you. Okay जी, like to start formally. यही हमारा डिसाइड हुआ था कि आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स में हम पूरा इंट्रोडक्शन कर लेंगे एंड रेस्ट ऑफ जो टाइम है हमारा उस पर विल गो विद द फ्लो. So I would like to ask the first question to Fizan Mahmood, that was working as a COO at Emerald Lab. So Fizan, my first question is for you, and that is, I would like to know that how 2020 has been for you so far. I mean, as a company, कैसा रहा, क्या opportunities थी, क्या खोया, क्या पाया. You know, COVID-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहां पर उसने तबाही ना मचाई हो. कुछ प्लस पॉइंट भी रहे, कुछ माइनस भी रहे. So we'd like to know particularly your intake, your company intake, कि क्या रहा 2020 आपके लिए. Gee, I think that's a very nice question, and so I think it was unprecedented for everyone. COVID का हम सुन रहे थे कि जी US के अंदर cases आ रहे हैं, China के अंदर आ रहे हैं, but we were not very concerned when we were talking about Pakistan specifically. Then in March, the government suddenly announces lockdown and preventive measures, and to be completely unprecedented था, so companies had to adapt immediately, so they didn't have time to experiment with things and come up with strategies, so they had to just move and follow the government protocols. So we did the same, and we transitioned completely to digital tools, and even till now we're not calling people at work, only our operations team comes to work. Our engineering team is still working from home, so it's been almost a year. Almost a year के साथ the good thing was that our team members are very flexible and understanding and adapting to the digital tools, but that also brought up an additional cost to the companies. We had to maintain our offices, so वो एक तो वो cost आ ही रही है. इसके साथ साथ we also had to enable our teams with digital tools like Zoom की paid subscriptions होना, G Suite की होना, Slack, Trello, etc. So a lot of tools came into the play, and I think that played a very vital role, especially when we're talking about Emerald Labs. I think it streamlined a lot of things. It became we as an organization always focused on transparency, and then when we started adapting these tools, not for formality but for official use like Trello and Slack, I think that promoted a great culture of team collaboration and a visibility
on a broader level. So that was there, and even at right now, though we promote remote teams and we are all for it, but at some point you need some junction point where all the team members can meet and interact. So the year has been challenging, but I think for Emerald Lab as a company, we experienced exponential growth in the same year because people were focusing on remote teams, people were focusing on technology sector. And if you even take a look at our technology sector, we talk about NetSol, we talk about system, I'm talking about the public listed companies. So all of them experienced exponential growth. So I think it has been a good year, at least for the technology sector. And जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का, ई कॉमर्स की तरफ लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरफ लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे. So all of this thing really exponentially grew in the last 1 year. So I think it has been a good year for the startups and the technology sector. That's my personal take on that. Great, wonderful. So for Khan or Iman, I would like to know about your point of view for a particular question. I mean, would you like to add something? Can you please unmute your mic? Hey, Hassan, so how's like 2020 being for us? Yeah, so absolutely. Yeah, so it has impacted us in 3 ways. Obviously, the core business was impacted because, as soon as COVID hit, the sports industry took a big blow. And then there were cancellation of sports events around the world. We also were very close to signing a lucrative exclusive deal with a squash media platform to broadcast live squash events from the subcontinent and the Middle East, which unfortunately didn't go through, so it had great impacts on our business. So we were left with a lot of question marks. Obviously, will the sports industry ever recover? How do we sustain? And then we also had growth plans in terms of the workforce, hiring a lot of full-time staff, which we had to obviously rethink because the access to capital and the lack of funding and grants or the aftermath after COVID was very negative in overall on the environment around us. So we obviously were trying to figure out like how do we sustain the business when that is all happening. On the other hand, the challenges around communications were still there. So Sportages was very unique in a way because we were born in a remote landscape already. So Zushan, my co-founder, Hassan, and then myself, we were working remotely already. But on the other hand, there were a lot of miscommunication around what could be the appropriate communication. And by appropriate communication, I meant a lot of things can be taken out of context when you're talking to people not in person and over the internet. And also there's with COVID and the uncertainty around a volatile workload environment can also flourish, which is definitely can be very negative if you sum it up. And obviously the delayed results and motivation on top of that as well. So and just saying, one of our co-founders, obviously because of those miscommunications and conflicts, he actually took the exit from Sportages. Unfortunately, story we've never shared with anyone. So it's not. But it hasn't always all been doom and gloom. There have always been the bright things as well. Going through all of that, gave us a chance to rethink our strategy and what we could basically do. So we started looking. Our content was initially very focused on the sports audience itself. So we started looking sideways instead of how can we create content that can also be consumed by sports athletes themselves. So we started doing a lot of interviews on the side, and Sportages podcast and videocast was born out of that need. We're talking to individuals and athletes about what are their challenges in the COVID environment and how are they dealing with that change, and then actually help provide a lot of support. And we received a lot of good response from the industry itself. And also we started reassessing the company environment as well and understanding what our skill sets are and where we could really diversify in terms of what we offer. And the Squash Summit was born out of that. So we understood that everyone needed to come together and discuss the future. So we thought, why not we start off with squash? We've got great endorsements
with the Professional Course Association, as well as Course Australia being one of our partners as well. So we went ahead and did that. And also forayed into capability enhancement. So I think learning is a lifelong process, and is always upskilling ourselves. So being at home all the time, ensuring that we're always upskilling ourselves in the areas that we need to. And I'd just like to expand on the point by Faizan as well, where he mentioned about a lot of tools that came in to help. And a lot of, and digital, like going digital was obviously the way to go with all of the task management. As I mentioned before, we actually started in a remote environment. So yeah, that was very helpful. And just on top of that, automating a lot of our tasks was critical to ensure that we're focusing more of our time on the important things that we need to. And bootstrapping, and Zushan, myself, and even Hassan, we work our day jobs, trying to keep the business going, and we're still doing that. But on the other hand, also trying to market ourselves in many ways as possible. And marketing is always thought to be as a very, ad spending sort of exercise. But marketing, on the other hand, could also be just getting your word out there, volunteer to actually come to events. And not saying I obviously attended this event for marketing purposes only, but killing two birds with one stone, where you could be helping the industry as well as getting your name out there and actually making connections. And finally, obviously, giving back to the community is always very important. So most of us have been challenged with, especially young graduates, challenged with issues getting into the industry. So if companies like ourselves could actually lend a helping hand and give them the skills they need to actually unleash their careers, that's actually very important in that sense as well. Great. Yeah. Wonderful, rightly said. अच्छा, आपकी और फैजान की डिस्कशन सुन के तो मुझे लिटरली ये लग रहा है कि देखें, हर किसी ना किसी प्रॉब्लम में, किसी ना किसी मुश्किल में अपॉर्चुनिटीज होती हैं. तो अगर ये कोविड-19 हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम बनकर आया है, तो लोगों ने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं. अच्छा, आई वुड लाइक टू हैव सेशन इन टू मीडियम, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में भी देख रहे हैं और हमें फॉलो भी करते हैं InvoZone को, पेप्टॉक पाकिस्तान को. सो लाइक टू हैव सेशन इन टू मीडियम, एंड माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज थोड़ा सा उर्दू और इंग्लिश दोनों को करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके. सो रियली अप्रिशिएट इट. आई मीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फैजान ने भी और आपने भी, कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में हमें मिली हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हैं. अच्छा, वो लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू Ahmed. Ahmed is working in the team tracking in the capacity of technical recruiter, I think that. So I would like to know about your intake on particular point. Ahmed, are you with us? Yeah, thanks, Wasim. So sorry, not a technical recruiter. Please don't put out any questions you have technical recruiting to my end. However, so yeah, for us, 2020 has been very, I'd say, progressive, and in the start, it was it had a toll on the company overall. So to understand how Keep Trucking dealt with it and how we were impacted with it. So Keep Trucking started off with a new market segment. Primarily, Keep Trucking, what we do is we offer fleet management solutions to the trucking industry that's based in Canada and US. So when the COVID situation came in, we had a new market segment that we had recently kicked off, and we had massively hired back in 2019. And that was very small businesses. So when the COVID actually came in, most of that industry was severely hit. Trucking was almost to a halt, apart from the very important sectors that could not go to a complete stop. So at one end, we had a market segment that was closing altogether. And then on the other side, we saw a hike in another market segment that eventually had to stay alive to make sure that everyone gets what everyone needs. So trucking basically keeps us alive, right? Yeah. That's what everything comes from. What we wear, what we eat, everything is based on trucking. So logistics was
a major thing in the US. So SMB, one of our small and medium business market segments, it really kicked off. So within 2 to 3 months of the COVID situation, eventually, yes, back in March, we went on a work from home basis, and that was permanent. So keep trucking. We already were following a mechanism where most of our sales force is based in back offices here at PK, and then we have front offices in the US. So all of that was previously already there. So apart from the person being sitting in the office and working, they were sitting at home. And so where we had to come in as people partners was the area where we had to manage those teams properly. And I'd say we have one of the best workforce here. We never faced any issues along those lines. It has been super, super efficient and seamless for the company. We have almost hired quite massively, even in 2020. So just to give you a number at the top of my head, we've hired about 200 people post-COVID. And that was all remote. So we have been a very strong advocate of how can things go on, keeping in mind whatever Furqan and yourselves have mentioned along the lines of tools that came into the market, all those new technologies that everyone was shifting to. So yes, everything helped us. We were already halfway there, but it was sort of a stamp on us to, hey, we guys are going to stay home. So we figured out, and it was amazing. So keep trucking, learn along the way on how to deal with a diverse workforce that is based in multiple regions globally. So we're based in US, we're based in Taiwan, India, Pakistan. Great. So all of these countries, and making sure that everyone, given the time differences, everyone working from home. Great. There are any other things that go around when you're working from home, especially in Pakistan. So coming along with policies that made sure that employees were well equipped with whatever they needed to work for. And then the motivation factor in employee engagement, that's really, really important. Because when you're working from home and you're managing teams, the biggest challenge that I see, and I think is what everyone else would feel as well, is getting people on the same page and creating that engagement within the team. You go into the office, you happen to have a cup of tea, you meet someone, you sit around 5-10 minutes of a chit chat, and then you get to work. That element really was missing, and I believe it's a way that managers and people leaders would go about managing their teams. But then again, I see it as a challenge, and I still see that there's more room on how we can engage our teams in a better way. And I'm more than happy to take any feedback and thoughts from this call. Great. Okay, great. Thank you very much for sharing your input on it. So, by the way, Filza जो है वो मेरी तरफ देखी है, and she's waiting her turn. Filza, I'm sorry, I'm taking too much time. The discussion is very healthy, so abhi we have to wait for a few minutes, minutes. Okay. That's fine. Okay. My next question is for Saira. Saira, question is that, what do you think that has been the most challenging issue or issues of 2020? That is work from home, managing work with the team, managing deadline, team monitoring, etc. अभी जिस तरह अहमद बात कर रहे थे कि मतलब डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए, आसान नहीं होता, और पर्टिकुलरली एचआर डिपार्टमेंट, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा लोग टफ टाइम जो दे रहे होते हैं वो एचआर वालों को ही दे रहे होते हैं. जो काम अच्छा हो गया वो हमने किया, जो काम नहीं हुआ वो एचआर वालों ने नहीं किया. मतलब अक्सर मैं कहता हूँ यार कि वो आप विलन बना देते हैं एचआर वालों को. आई मीन इन सम जगहों पे. आई मीन सो वुड लाइक टू नो पर्टिकुलरली कि क्या क्या चैलेंजेस रहे 2020 में, क्योंकि हम बात करेंगे रियल टाइम सिचुएशंस की. हमने कोई किताबी बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है कि जो हमारे इश्यूज जो एचआर को फेस करने पड़े या फ्रंट एंड पे जो बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी फ्रंट एंड पे फेस करनी पड़ती है. सो आपके लिए 2020 में किस तरह ये चैलेंजेस रहे,
और जो आप मॉनिटर करती हैं घर से परफॉर्मेंस को वर्क फ्रॉम होम, कैसा रहा? हमें प्लीज। मैम मेरा जो पेंडेमिक का आपका एक्सपीरियंस आप कह सकते हो वो डिफरेंट था बाकी कंपनीज के, इस पर जैसे कि एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू गाइस शेयर्ड कि जी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो जस्ट 22 डेज का था, इससे ज्यादा हमारा क्वारंटाइन नहीं था, इससे ज्यादा हमारी मैनेजमेंट ने अलाउ भी नहीं किया था कि आप घर बैठे हैं, यू हैव टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. Yes, I actually second everything of Ahmed Khalid. इन्होंने जैसे बताया कि कभी-कभी टीम्स की जो मॉनिटरिंग है वो वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है. तो somehow for the checking, I just called an employee कि आप कहाँ पर हैं, आपने ग्रुप में मतलब अटेंडेंस या स्लैक में अटेंडेंस लगी, ये किया वो किया. He said, oh grocery लेने के लिए आया हूँ बाहर. And I was like, okay fine. You like not at home, marking your attendance in the group and all that, and now you are here for the grocery. वो actually पता ना पेंडेमिक की सिचुएशन में पहले जब आप उनसे पूछते हैं ना तो वो कहते हैं अच्छा तुमने मुझसे पूछा फोन करके, मतलब मेरी अटेंडेंस सब, तो फिर वो और चीजें पर्सनल होना स्टार्ट हो जाती है. हालांकि उसको बताया है भाई ये अटेंडेंस की पॉलिसी है, तुमने स्लैक पे ये चीजें करनी है, ये इन करना है, आउट करना है, तो वो फिर उनको समझाना भी उस टाइम ना जरा डिफरेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. Exactly. I have joined this company. Actually, there was a startup. Ecologist को जब किया था, that was actually startup company थी. That was like आप कह सकती हैं they consist of only 20 people. और जब मैंने यहाँ पर आके अपनी policies और जितनी भी आप कह सकती हैं चीजें थी स्टाफ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, तो everybody got hostile with me कि जी ये अब आ गई है, जो है ना ये हम हमारा typical language में ना इससे हमारा बेड़ा करके. So it was कि मैं को कई दफा समझाती थी कि देखिए अटेंडेंस की पॉलिसीज एंड ऑल दैट ये सब आपकी बेहतरी के लिए ही होती हैं. You don't need at an odd time and go and all that ये वो. अच्छा सायरा, इसके ऊपर पर्टिकुलर मेरा एक सवाल है, वो ये है कि सवाल ये है कि वो कहते हैं हमसे आप ये ना पूछें अटेंडेंस का, हमसे ना पूछे कि ये करना है, आप हमसे डेडलाइन का पूछे. डेडलाइन मीट हो रही है या नहीं हो रही? मैं घर से बैठ के काम करूं, मैं जहां से मर्जी करूं, इन करूं, आउट करूं, रात को 2 बजे भी क्लाइंट के साथ ऑनलाइन. सो वुड लाइक टू नो, क्योंकि यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि ये रियल टाइम सिचुएशंस है. वुड लाइक टू नो एग्जैक्टली दैट इज सिचुएशन, आपका ओपिनियन कि क्या करूं. बट इस किस्म की सिचुएशन वाकई सर एक्चुअली बात ये होती है कि लाइक मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि somehow we have to give some space to the certain employees, like जैसे आपके software engineers and all that. But why should we destroy the quorum of the company? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन होता था कि फाइन, अगर मैं आपको इतनी लेवरेज दे रही हूँ या आपको मैनेजमेंट की तरफ से इतनी चीजें मिल रही हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर है who are working और who are coming on time? आप उनके लिए क्या मोटिवेशन छोड़ रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आपको somehow क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होना पड़ता है, यू हैव टू डील विद ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टफ एंड ऑल दैट थिंग्स, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो कंपनी के कोरम है, जो पॉलिसीज हैं, व्हाई वी आर मेंटेनिंग दोस. इट कम्स टू द पॉइंट, तो पेंडेमिक में एक्चुअली सबसे जो टफेस्ट पॉइंट था मेरे लिए, दैट वाज मॉनिटरिंग. people management, monitoring, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना. तो somehow I have to conduct a meeting, लेकिन टीम मेंबर्स अवेलेबल नहीं है. रीजन इंटरनेट कनेक्शन, रीजन वो घर पे हो गया, हमारे यहाँ सिग्नल, हमारे ये है, these all are lame excuses. सही बताऊं तो पाकिस्तान कोई एक्चुअली लाहौर का कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे आपको सिग्नल इशू इतने से until unless you are not in basement या बहुत टॉप पर आप नहीं है. Yes, एक ये सिचुएशन मुझे देखने को मिली. Secondly, as this is a startup company, so people are start discussing things on their own. I mean, they are in their hometowns and they are saying कि why HR is asking for us कि जी आप attendance लगाएं. Pandemic में कौन attendance लगाता है? Even me सॉफ्टवेयर हाउस में यहाँ पर ये भी स्टार्टिंग में इशू था, ऐसी कौन सी आईटी कंपनी है जहाँ पर अटेंडेंस मशीन होती है? And I was like, ऐसी कौन सी आईटी कंपनी नहीं होती जहाँ पर अटेंडेंस मशीन नहीं है? अगर मुझे दिखा देना, होप सो आपकी कंपनी में नहीं होगी, बट दिस वाज द इशू. इन तमाम इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए मेरे सीईओ ने ऑलमोस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्या किया था कि व्हेन एवर हुकूमत ऐसा लीनियंसी दिखाती है, थोड़ी सी जरा इस जैसे सॉफ्ट होती है, यू हैव टू ओपन योर ऑफिस, बिकॉज यहाँ टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था. जो तो आपके इस तरह के टीम मेंबर्स हैं, वो आर नॉट गिविंग एनी गुड परफॉर्मेंस, तो उनको मैनेज करना इसमें से ज्यादा मुश्किल होता था. Beside that, वो अपने साथ साथ एम्प्लॉयज को भी खराब कर रहे हैं. Also, spreading that kind of negativity. देखो मैंने भी तो HR को कह दिया ना, तो तुम क्यों नहीं कह सकते? Yes, अभी आई थिंक फुरकान ने शायद एक पॉइंट रेज किया था कि yes we are now
काफी टीचर्स, क्योंकि आज से तकरीबन 1-2 साल पहले ना कंपनीज को लगता था कि HR इज जस्ट काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट, किसी को इतनी खास जरूरत नहीं है, व्हाई शुड वी रिटेन HR तो 25-30 हजार का भी रखा जा सकता है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पे हम HRs क्यों रखते हैं? दिस वाज द मेन पॉइंट, वी वर द पर्सनल्स जिन्होंने इन थिंग्स को मैनेज किया, we have groomed everything, we realize our management team kind of a personnel are also the part of, actually the main part of the company. CEOs कभी भी employees के साथ direct नहीं होते, तो personnel जो उनके साथ direct भी होते हैं, जो उनकी नजर में बुरे भी बनते हैं. जैसे स्टार्ट में आप लोगों ने कहा कि जी HR पूछ क्यों रहा है, अब अगर CEO डायरेक्ट पूछेगा तो ऑब्वियसली उसका ख्याल वो जो सर्विसेज साइड का है या जो उसको उसका टाइम है, सेल्स का एक्चुअली उसका रेवेन्यू जनरेशन So, Saira, thank you very much for your input. So, we'd like to ask the same question to Uzair. Uzair, what is your point of view for that? Are you with us? Yes, thank you so much, Hassan, for asking this question. Actually, I'm not the HR professional. Yeah, I know that. I'm not asking you on the behalf of HR. I'm just asking you. Let me rephrase the question for you. Yeah. So, what do you think the most challenging issue of 2020? That is work from home, managing work with team, managing deadline, team monitoring, etc. Okay. Definitely, actually, our company's business model is we have to present in the physical market because products and commodities are involved. We have to deliver the services, we have to deliver the products. So working remotely, is mostly not suitable for companies with a business model like us. So definitely, like others, we also faced a lot of challenges, force majeure clauses, supply chain disruptions, shipping line delays, change in the policies and prices, spike up in the raw material prices, production schedules, stock replenishment issues, and deliveries to the end users. It means from the supply chain till the distribution chain, the whole cycle is affected at our side. But since we are here and we are working with Saudi Aramco, so there is a policy by the Saudi government that the companies whosoever are working with Saudi Aramco, they issued them a special permits to work. So in 2020 we don't have that much, only for 20 days we have a lockdown. Other all the period we were working, we are supplying to the Saudi Aramco, the subcontractors and protectors of Saudi Aramco. So I must say it's a blessing in disguise for us, 2020. So in our revenue stream goes up. We what we forecasted, we supplied double, tripled of that because there was the market was dried up, and we have a safety business unit. We have this dust mask, we have this cartridges and PPEs what we are supplying to Saudi Aramco for their oil fields, for their oil rigs offshore and onshore. But we don't know that there is a boom in that demand in the medical sector. So the thing which we are selling in like 1 real, we sold it like in 300-400 reals because that was the norm of the market. So both ways, but the only challenge what we faced is how to manage our workforce, because definitely there is a cut down of 50% of our workforce, and we don't have the experience to work remotely. So what we did, the people who were sitting idle, we gave them trainings for supply chain management, for safety trainings, orientations, sales trainings, and for the people those are working in the offices, they got bonuses because they are working in a very critical situation, putting their lives into jeopardy, and our warehouse team, those guys, they did tremendously well. They pick and pack the stuff for us, and they help us to achieve that milestone. Thank you, Zach. Thank you very much for your feedback and for your support. By the way, we're getting the comments on our YouTube channel InvoZone में, and the comments मैं आप लोगों से share करना चाहता हूँ. We're getting the questions from the audience. वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ले सके, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे हैं और अभी मूवी बाकी है मेरे दोस्त. सो अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अभी हमने करने हैं. तो जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. हसन भाई की शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू वेरी मच. आफ्टर वर्क
from home. Next comment is that I have started and even more. I don't want to continue from office anymore. Was just convert my bed into workstation. That's very interesting comment, by the way. So we're getting more comments. So like to ask next question to Iktisam Qureshi. Iktisam, my question is for you. So question is that how work from home affected your working time? And was it successful, unsuccessful for your company? It's affected a lot to us. Basically, we started up in 2019, so we are a startup at the moment. And the pandemic happened in March. So it was very difficult for us to manage at the moment because we launched our ERP, almost ERP. So we provided customer service to all the customers locally and internationally. So it was rather difficult for us because the motive of our company is to give chances to the fresh people. So we hired a lot, 10 fresh and 10 experienced customers. So when the pandemic occurred, it was rather difficult for us to handle that. Because we went to work from home for 2 months, but it initially caused us a lot of damage. As our guest speaker, I guess Saida, said that when we call someone, why are you not working? He said, sir, I'm in the bank, I'm waiting for my time, I will work in the night. So I can say our deadline was compromised. In 2 projects, our deadline was very much compromised. We initiated some tools like Power Maker for the work, but I don't think the work from home was very suitable for us in the beginning. But after that, and after 2 months, we were used to it, and we, as you can say, we just put some effort in that, and we have some strictness in our company about the work and the deadline. So I will not recommend work from home. In my perspective, if you are a startup, you can't go with work from home. And when you are established company, you can go for that. Because we have to train our employees, we have to train them how to go in the market and how to interact with our clients or the person. It was very difficult for us at the start. But now, alhamdulillah, after some time, we know how to manage our team, how to manage work from home. But initially, it was very tough for us. Great. Thank you very much. Okay, I would like to ask the same question to Hassan Ajmal. Hassan, what is your point of view on it? जी बहुत शुक्रिया. ओवरऑल लाइक हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एज फैजान ने मेंशन किया था, इवन इन ऑस्ट्रेलिया डिजिटल स्पेस में काफी बूम आया था, स्पेसिफिकली अक्रॉस दी वीडियो कंजम्पशन. सो ओवरऑल हमने देखा कि रिसोर्सेज का इनिशियली हमें इशू हुआ था काफी, because we started working from home since March and everyone was pretty new, like with the work from home environment. किसी को नहीं पता था कि कैसे हैंडल करती है सिचुएशन वगैरह. तो यहाँ पे थोड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अपनी HR वालों को. लाइक उन्होंने काफी अच्छी ग्लोबली पॉलिसीज लाई, जिसकी वजह से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट को enjoyable बनाया. So overall, like coronavirus pandemic, like it has affected us in both positive and negative ways. Initially, काफी uncertainty थी market में because everyone was new to the work from home world. Later things were getting better as everyone was getting used to it. Overall, I think a काफी shift in the way people think about work and working from home that might even become more widespread than it was just a short time ago. So overall, COVID-19 ने काफी impact किया था every aspect of our daily lives, including overall productivity. We were seeing high shifts, like in our activities levels, changes in daily schedules. Overall, like we were staying on top of things outside work, और काफी हम productivity tools use कर रहे थे जिससे हमारी productivity affect ना हो. Overall, obviously, like there were few issues like social isolation and employment uncertainty. Overall, I believe like पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा था. Overall, work from home burnout and the virus itself have combined to shock the health and well-being across the world. Overall, I believe. So initially, obviously, work from home environment हमारे लिए सबके लिए new था. Organize करना थोड़ा मुश्किल था.
So proper work plan. I initially overall we started using Microsoft Teams, not only for our internal catch-ups, for our external catch-ups as well. जिससे हमें काफी हेल्प हुई, काफी इंटरेक्टिव सेशन हो सकेंगे बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी है लाइक एडवर्टाइजिंग की. So obviously face on face वो prefer करते हैं sessions वगैरह. And overall what we did differently, like on daily basis we used to conduct different intentions just to make sure that everything is everyone is on the same page. सबको roles and duties हम structure करते थे. Overall another thing जो HR ने बहुत अच्छी की थी हमारे यहाँ वो लाए थे concept work from home diaries का overall. So work from home diaries ये था कि every Tuesday आप किसी टीम मेंबर को नॉमिनेट करते थे एंड ओवरऑल वो कंपनी को ब्रीफ करता था कि आप वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में आप कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, क्या डिफरेंट कर रहे हैं, लाइक एंजॉयबल और फन लविंग वर्क एनवायरनमेंट देने के लिए. ऑन द अदर हैंड लाइक एवरी थर्सडे वी यूज्ड टू बुक स्लॉट इन ऑर्डर टू रन अ क्विज जो आपके डिफरेंट पोर्टफोलियो से जस्ट टू मेक वर्क फन लाइक वर्चुअली एज वेल, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आप की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, वर्चुअली भी आप एंजॉय कर सकते हैं. एंड वी वर आल्सो फॉर्चुनेट इनफ लाइक थिंग्स गॉट बेटर इन ऑस्ट्रेलिया एंड लेटर वी started going to the office. So right now we are going to the office like 1 day per week because यहाँ पे corona situation काफी बेहतर है. And as soon as we gain more experience working from home, basically we relied on resilience and creativity in order to adapt drastic changes at work and life. So overall, overall conclusion. Wonderful, Hassan. Rightly said. And बहुत जबरदस्त practices आपके HR वाले कर रहे हैं और international level पे हो भी नहीं है. I mean, we really appreciate that. So, final question that I would like to ask, then I'll hand over to Filza. देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो मॉडल है वो हमें ये जानने की जरूरत है क्या वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं ना, माय वॉइस इज ऑडिबल फॉर एवरीवन. फिल्जा, कैन यू हियर मी? Yes, clear. तो हमें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल है क्या वो पाकिस्तान में चल सकता है. 2-2 मरले के घर हैं, 3-3 मरले के घर हैं, एक कमरे में इतनी बड़ी फैमिलीज रहती हैं, डिफिकल्ट होता है. क्लाइंट ऑनलाइन हो जाता है अमेरिका से, यहाँ से बच्चे घूम रहे हैं, वहां से बच्चे आ रहे हैं, गोद में बच्चा बैठा है, मतलब इंटरव्यूज हो रहे हैं तो पीछे से बैकग्राउंड किसी और तरह से नजर आ रहा है. सो would like to know from all of them, I mean कोई भी volunteer करना चाहे, so what personally do you think that क्या ये work from home जो मॉडल है पाकिस्तान में चल सकता है? I mean so very practical question. Anyone volunteer? Anyone who want to volunteer? Hassan, I think I'd like to chime in. That's a really good question. Yeah, Ahmed, what do you ask? Please. I think it's certain. I'm sorry, I didn't mean to cut off someone else. So I think one of the baseline questions that we need to answer, that is the will of people in general. So I've been seeing this trend from different companies, from their workforce, and how generally low respond to this. So with tech companies, I've seen it very different. Different companies have seen it very differently. My bottom line on this would be, it simply boils down to an overall willingness of a person to, eventually figure out if they want to work from home. Because we've had problems with people who were initially facing issues working from home. Similarly, the ones that you discussed, where interferences hain while working from home in the family, internet issues hain. You might have issues with finding a best place for yourself to work in. But then again, I've realized over the time working with both local and international people. And Ahmed, अगर घर में कोई नाराजगी भी चल रही हो ना तो वो भी लाइव सेशन में आ जाती है. Exactly. But one thing that I've noticed is people are, so everyone has been at work from home, so people really do understand. Yes, if you have a crying baby in the background, that's fine. If you're able to hold the proper conversation, that's fine. So I think it simply boils down to the overall environment and the willingness of people.
I believe work from home can be implemented. हमारे यहाँ बहुत सारी policies I see in Pakistan और general development में आ चुकी हैं. And we have systems and tools and processes to use वो सकती free of cost. So I think it again boils down to the willingness of people. But then there must be constraints at times. So Great. would love to hear Thanks. about. Fazan would like to know about your point of view on it. So I'll agree with Ahmed what he was saying. It's all about willingness. देखिए जी, offices को ताले नहीं लगे. Government ने कहा है कि 50% occupancy है. That does not restrict you from coming to work. So if you are preferring to work from home, you opted for it. The company didn't force you to do it. So जब आप उनको ऑफिस में लाते हैं, अब थोड़ी सी उनकी ना वो आदतें भी थोड़ी सी इम्पोज की खराब हो गई हैं कि जी अब गर्मी है, अब सर्दी है, अब ट्रैफिक आ गया, अब PSL का मैच आ गया, so I can't come to work. But I spend a lot of time traveling abroad, etc. So I think अगर आप किसी भी developed country की बात करते हैं, you can't afford to live in downtown. It's extremely expensive. So you have to travel almost 1 hour or 1.5 hours one way to your work. Especially, for example, if you're talking about a city like London or a city like New York, आप अपना दिन के तकरीबन 3 घंटे underground subway के अंदर गुजारते हैं. But people come to work. So when we are talking about Pakistan and the challenges that it brings, yes, we have small households and we have large families, but we also have one of the cheapest internet in the world. We also have multiple options to connect. So that provides you an enabling environment, and at the same time, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ willingness की जैमल ने बात की. We're not restricting anyone to come to work. It's their call if they want to work from home. And the company expects productivity. The challenge that I have personally felt is when we brought in the Slack, Microsoft Teams, Google Hangouts. उसकी वजह से जो small talks होती है ना, water cooler talks. अच्छा बताओ कि आज क्या हुआ, तुमने देखा बॉस ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, वो सारी चीजें eliminate हो जाती हैं, and then you're only talking about productive things. You're only talking about work. So which kind of upsets the mindset that we as a subcontinental belt have कि दूसरों की चीजों के बारे में थोड़ा interest ज़्यादा लेना. So when it only comes to productivity and work and tasks and projects, it becomes a boring workplace. So that has become a challenge in itself. And again, बात वही है कि as human nature around the world, we are never content with what we have. Initially, people wanted to work from home. कि जी वाह घर से काम करेंगे. Now they are pushing कि मैं हमने office वापस आना है, हमने office वापस आना है. So it's just like human nature. So you can't control that much. Agreed. Wonderful. Right. Furqan, would you like to add? Furqan Rahman, would like to add something? Absolutely. So मैंने obviously पाकिस्तान में भी काम किया है 5 साल और ऑस्ट्रेलिया में भी किया, तो I think हम भी we are in the same boat as well कि यहाँ भी challenges, यहाँ भी obviously इतना easy नहीं है काम करना work from home, क्योंकि पाकिस्तान में होता है घर एटलीस्ट ईंटों के बने होते हैं, यहाँ तो लकड़ी के घर होते हैं, तो अगर शोर दूसरे कमरे में हो रहा है तो ऐसा लगता है उसी कमरे में हो रहा है. And especially just talking from my personal experience, I've got a 3-year-old, so she's as loud as she can get. तो वो काफी चैलेंजिंग हो सकता है. तो उसमें भी काफी अब डिजिटल टूल्स आ गए हुए हैं टू ऑब्वियसली फॉर नॉइस कैंसलेशन, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि चैलेंजेस हमेशा रहते हैं. और टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, फैजान ने आई थिंक एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट चीप है, बट ऑन द अदर हैंड आई गेस talking about Australia, we've got a lot of support from the government कि हमें tax concessions मिलती हैं. If you're working from home, आप वो as a tax exemption डाल सकते हो on your bill or on your, whether it's internet, whether it's electricity, तो वो एक काफी अच्छी चीज हो जाती है. और speaking about challenges, I guess एक और चीज भी है कि it's very easy to get lost in work, and हमारे basically company में यही हो रहा था कि people were often ending up to work more than they actually were required to, क्योंकि होता यह था you get up at 9, फिर आपको पता नहीं होता कब 5 बज गए, कब 6 बज गए हैं, तो आपको वो जो अपने आप को रोकना होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. और वो it's like it blurs the line between your professional and work and your personal life. तो challenges I guess हर जगह रहते हैं, लेकिन बस यही I guess you have to learn to cope. और absolutely जैसे हसन अजमल ने भी पहले कहा था कि reaching out, sharing your experience with others
can actually help you go a long way. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि when you actually get up for work, don't just go on your bed. Actually नहाओ धो, proper कपड़े पहनो. It gives you a vibe that you're actually getting ready for work. तो वो काफी हेल्प उसने चीज ने काफी हेल्प किया. तो Agree. Rightly said. अच्छा, आपको तो टैक्स एग्जम्पशंस और वो बाकी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. पाकिस्तान में ये हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हैं तो लोग घर वाले भी तंग आ जाए, तो कहते हैं तुम्हारी मेहरबानी है भाई, ऑफिस जाओ, स्टार्ट करो. सो आई मीन जो अभी फिजान बात कर रहे थे ना कि एम्प्लॉइज अब कह रही है कि जी ऑफिस आना है, हमने तो उसके पीछे ये पूरा होमवर्क है कि घर वाले भी अब तो फैमिली डिस्टर्ब हो गई है सब लोगों से कि कहते हैं उठो जाओ घर जाओ. फिजा नाउ बिल्कुल. So Filza, now I'll hand over to you. I'm sorry मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने को, डिस्कशन इतनी जबरदस्त चल रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया इतने ज़्यादा सवाल थे, तो प्लीज ओवर टू यू. It's completely fine. It's completely okay. So now I'm actually enjoying the discussion. Like everyone is giving out their perspectives of the experience with RA and all. And yeah, it's true. जैसे सायरा ने वो एक बात की थी कि जो ये आदत है जी ग्रोसरी लेने के ये किया वो किया. This is actually true. It has been happening around. बल्कि इसी से relevant actually मैं सबसे ये question पूछना चाहूँगी कि if you are given a chance, do you think you would want to continue working from home? Like, is it more appropriate now or work from office is better? So let's start from Sayeda. Sayeda, I guess office is better because work from home ना मतलब सबके लिए अच्छा नहीं होता है. Like families issue होते हैं. The major issue was load shedding, internet issue होते हैं. उसमें क्या कहते हैं employees focus नहीं कर सकते. Like I am directly working in HR department, so मेरे लिए manage करना ना बहुत मुश्किल था work from home. Daily सबको calls करना, Slack पे उनकी attendance लेना. तो मोस्टली तो ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज होते थे जो मतलब कि सोए होते थे. लाइक उनको कॉल करके भी उठाओ के आओ यार स्लैक पे अपनी अटेंडेंस लगाओ. उसके बाद घर की उनकी एक्टिविटीज होती थी, उसमें वो बहुत ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि उनको कहना कि आओ रिपोर्टिंग करो कंपनी में, अपना टाइम टास्क वगैरह उनको देना. तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था. मैंने ये 2 मंथ फेस किया था ये ना. तो मैं अकेली HR में थी. उसके बाद क्या कहते हैं मुझे डायरेक्टली फिर आफ्टर 5 PM मुझे डायरेक्टली अपने CEO को रिपोर्ट करनी होती थी. तो इस वजह से जब ये ऑफिस रिज्यूम हुआ है मैं लाइक बहुत रिलैक्स फील किया कि सब टाइम पे आ रहे हैं, सब टाइम पे जा रहे हैं और रिपोर्टिंग लाइक सब ठीक हो रहा है. सो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ बेटर फॉर HR डिपार्टमेंट. I do agree. इसमें बिल्कुल challenges बहुत ज्यादा आ जाते हैं. फिजान, आपको क्या लगता है? आप थोड़ा insight अपना दें. आपको क्या लगता है? Would you want to continue working like this? Like work from home is more better for you या work from office आपको लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा in coming future? अच्छा, I want to add क्योंकि I'm working with Fizan and I know that his answer he will go for from office, that he is comfortable with the office. So मैं agree कर रहा हूँ सईदा के point of view से भी. देखिए, it depends on the kind of role that you are in. आपकी जो roles and responsibilities उसके मुताबिक dependent है. अब now I'm taking care of the entire office. अब मैंने payroll process करना है, मुझे check sign करनी है. मैंने tax की payments करनी है, मुझे check sign करनी है. अगर मैंने hiring करनी है, मुझे contract sign करनी है. So there are now if you talk about my role, I need a lot of work that needs to be manually done. So it depends from functional role to role. And if you ask for my personal preference, for example, right now, I like working from the office. I just feel that it's more productive and it's more focused. Just अभी मैं अपने घर में हूँ, लेकिन I've converted an entire room into a home office just so that I can focus on my work. But at the same time, अगर आप एक office work की बात करते हैं, वो कहता work from home अच्छा है. ऑफिस आना भी नहीं पड़ता, सैलरी भी आ रही है, किसी को चाय भी नहीं देनी पड़ी, किसी के दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ रहा, सैलरी आ रही है. So it just depends on the role that you are in. And I personally think productivity के point of view से and team collaboration के point of view से it's much easier to work from an office as compared to work from home, no matter how enabled the environment is. Filza, I want to add a few lines. Yeah, go ahead. देखिए, जो वर्क फ्रॉम होम है ना, जो मुझे ज्यादातर क्योंकि I have total 17 years working experience और different sectors में मैंने काम किया है और अभी I'm working as a consultant for few companies. टेक में ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. रिटेल
सारे के सारे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सारे के सारे आ रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में लोग आ रहे हैं, लेकिन टेक में पर्टिकुलरली जो है वो वर्क फ्रॉम होम है. सो यही आई जस्ट वांट टू शेयर विद दैट कि जिस तरह फिजान ने भी बताया कि उनको भी लग रहा होता है यार घर बैठे रहो, सैलरी आ रही है, ये सारी चीजें हैं, तो वो तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत हमें भी इन चीजों को देखना पड़ेगा कि टेक में शायद ये है, तो किस तरह से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं. One more thing, sorry, Hassan, मैं add करना चाहूँगा with this sector, what the engineering people have a lot of edge on is that they can work from home and freelance. That no one will ever find out. So because of that, ये कि आपके जो team members हैं, अगर हम लोग ऑफिस आएंगे तो उनका freelancing वाला जो gig है ना, वो थोड़ा सा compromise हो जाता है because if they're at work, they're at work. So that's an added advantage that at least the tech sector is enjoying, that they're working from home and freelancing as well. So, that's an additional take on why people would prefer working from home. It's the additional income. Well, yeah, I do agree. Well, keeping this question same, Ahmed, आपको क्या लगता है? What would you prefer, or what do you think is more convenient? Work from home, work from office? आप अपना क्या point of view देंगे इस पे? Right. What do you have? So I think, in my point of view, if I talk from, again, it's sickening Pezan over here. It's more department centric. So if I say keep tracking ko dekhte hue, I would really forecast that we are going to be at work from home for a longer period of time because it's actually working out for us. In my personal opinion, I would really want to go back into the office because there are multiple things that you actually miss. That daily interaction, the fine line between its work time and it's your personal hours. And then, again, I think someone on the call mentioned that once you're working from home, you tend to keep on working and you tend to lose track of the time itself. And again, I have a really newborn as well. So, coupling all of this together, it's again depending on what kind of a role you're in. So if you're a recruiter, or you can simply work from home, go ahead. If you're working in support or sales, work from home works for you best. लेकिन अगर आप workplace में, if you are in workplace in facilities, if you are in IT, जहाँ पे आपको laptops hand over करनी है, लेने हैं, you have to troubleshoot, इस तरह का काम है, I don't think that's really. Let me turn my video off. I think it works. Is it any better? Are you guys able to hear me? Yes, Ahmed, we can hear you. Cool. So I was just saying, just to wrap it up, I was simply saying it's more focused to department and role to role. And I believe it is going to be a mix of both in the long run. A few companies would adopt to a completely remote work style, and then there would be a few companies that would include a hybrid structure. Just can they work from home, and then people are coming to the office. And then there are industries such as retail, FMCGs, and textiles, where you cannot simply have it. So again, it's position centric and role centric. Well, yeah, I do agree with that completely. ये चीज है क्योंकि बहुत सारे अगर HR प्रोफेशनल्स को भी देखा जाए तो आई थिंक बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स को इस चीज पे इशू रहा होगा. And continuing to this, I would actually like to know, especially HR person से यहाँ पर, कि आपने recruitment को अपनी कैसे manage किया? Like, how were you managing the recruitment side of it, especially during the lockdown period? जो अगर हम पाकिस्तान की स्पेशल में बात करते हैं तो दरमियान में जो मार्च के बाद टाइम आया था, दैट वाज लाइक क्वाइट ऐसे कि बस सब बंद है, कुछ नहीं करना ये वो. तो सायरा, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूंगी, यू वर वर्किंग फॉर इकोलॉजिक्स एंड आप बता रही हैं आप लोगों को तो कंडीशन रहा है, बट हाउ वर यू मैनेजिंग ड्यूरिंग दैट? At that time, we just hold all our recruitment services and the recruitment positions. Actually, हमारी जो positions का था वो ये था कि we were in the middle of those something and now how to manage these things. उन दिनों में actually मेरी जो recruitment थी that was on hold. We only hired a person that was on VP level, just.
और उसके अलावा हमारी कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं थी. बट yes, the challenges were all about to gather the team on the same platform for the sake of attendance and for the sake of all the other things that we did. So recruitment was on hold at that time. But yes, after we got started our office or we got open our offices, then our recruitment was distributed. Right. Okay. So over to you, Furqan. रहमान, आप थोड़ा फुरकान हमें बताएं, like how you people were dealing with the recruitment side of it. या आप लोगों ने कोई hiring की थी, नहीं की थी? किस तरह से आप लोग इस चीज को मैनेज करते रहे, especially during the lockdown period? So जैसे कि मैंने पहले बताया था, obviously कि we were having challenges और business impact काफी हुआ था. We had to change our approach. So we started, instead of hiring full-time staff, we basically thought of alternatives, और इसमें हमने काफी जो casual और part-timers रखे, and also we started outsourcing a lot of our work as well to freelancers. तो वो हमारी basically technically यही approach रही है. और obviously मैं इतना HR का professional नहीं हूँ, तो I wouldn't be able to obviously add much to that. चलिए आप मेरा इससे नंबर नोट कर लीजिए. It's okay. Actually, I have a पीछे You can continue. No worries. Yeah, sorry, I was thinking you're asking me something. हाँ, बस तो I guess यही है कि I guess people should also look into alternatives. कि ज़रूरी नहीं कि full time staff hire करो. You could obviously bring in people on a part-time basis, depending on क्या है. तो obviously आपके कितना budget है, क्या है, how much money and resources you have on the financial side. Or outsourcing is also a good thing to look into. A lot of the time issue ये हो सकते हैं, हमारे साथ ये issue था कि we obviously have to control the quality of the content that we produce. So it wasn't easy to really outsource. So managing all of that was was a very challenging and arduous task. तो फिर वो ये है कि we eventually managed, and just repeating that digital tools came in very handy in doing all of that. There are tools about reviewers, so you can actually review and check and manage people's tasks and stay on top of them at all times. Yeah, I do get that. पर इसके ऊपर थोड़ा इनपुट आपका भी लेना चाहेंगे. हसन, I think I'm pronouncing your name right. Hасан, आप थोड़ा बताएं, since you are dealing with the performance side of your company as well. So what's your insight on that? आपको क्या लगता है recruitment किस तरह से मतलब manage हुई है, की है, नहीं की, या recruitment से अगर हट के हम बात कर लेते हैं performance के ऊपर भी, तो do you think the work from home thing affected your company or your business? I just want to add few lines. Hassan, I'm sorry. थोड़ा सा आपने ना हमें जरा एक्सपीरियंस भी बताना है कि फॉर एग्जांपल जैसे कैंडिडेट्स जो थे they are not prepared for the telephonic interview, they were not prepared about the video interviews, किस तरह से करनी है, क्या होना चाहिए, अटायर क्या होना चाहिए, किस एक्सेंट में बात करनी है, क्योंकि सारे पहले तो हम फिजिकल इंटरव्यूज करते थे ना, तो अब जब हम चले गए डिजिटलाइजेशन में, तो कैंडिडेट्स का जो उनका माइंडसेट है वो वैसा नहीं था. तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई उनको इंटरव्यू करते हुए डिफरेंट कैंडिडेट्स? आई होप दैट यू गेटिंग माय क्वेश्चन, हसन. So initially obviously recruitment हमारे यहाँ भी होल्ड में थी ड्यू टू कोरोना, but as soon as situation जो थी वो बेहतर हो रही थी तो फिर रिज्यूम हो गया था सब. So recently हमने कोऑर्डिनेटर हायर किया है, तो इनिशियली हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं जहाँ पे हमें इंटरव्यू लेना पड़ा वर्चुअली. ऑब्वियसली इट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस. हमने कभी ऐसे रिक्रूट किया नहीं था. पहले ऑब्वियसली फिजिकली जाते थे और रिक्रूट करते थे, बट ओवरऑल लाइक हमें इतना इशू फेस नहीं हुआ बिकॉज they were giving the same kind of environment virtually as well. So जो हमारे लाइक अगर हमने किसी को रिक्रूट करना है तो हम उसको पहले ब्रीफ वगैरह देते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ही प्रिपेयर वगैरह करनी होती है. फिर हम उसके जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो एसेस करते हैं. तो हमें ऐसा जितना इशू फेस नहीं आया बिकॉज इट वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी अच्छा है. हमें ऐसी कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं.
सही है. So it's like कि आप लोगों को मतलब जिस तरह से ये करते रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑल, तो इसमें जब आपने फिर अगर हम बात करते हैं चलिए रिक्रूटमेंट से थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, जब आप लोगों ने हायरिंग कर ली है और परफॉर्मेंस वगैरह से आप चेक कर रहे हैं, तो डू यू थिंक आप लोगों ने किस तरह से उसको मैनेज किया, स्पेशली जो टास्क ट्रैकिंग आई वुड से, हाउ डिड यू मैनेज विद दैट? For that, we have like different tools that we use here at Icon WPP, जहाँ पे हर बंदे के different KPIs वगैरह होते हैं, हम structured out करते हैं, तो एक proper procedure है, उसके साथ जाते हैं, फिर ऐसे आप उसकी performance track करते रहते हैं on quarterly basis. So for example, अगर हमने initially किसी को recruit किया है तो उसका 6 months पूरा plan होगा, जहाँ पे उसको पूरा ट्रैक करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में भी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, टास्क अपने कैरी आउट कर रहा है सब. तो प्रॉपर एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसको हम साथ लेके चलते हैं और असेस करते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस. So it means कि आप लोग KPIs पे कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आप लोग एम्प्लॉयज को टास्क के हिसाब से कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टूल्स आप लोग इसके अलावा यूज कर रहे हैं जिससे आप मॉनिटर कर सकें या जिससे आप चेक कर सकें कि आप किस तरह से आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जा रही है? एक टूल है ऑफिस, उसका नेम मैं अभी नहीं बता सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजन, सो वो टूल हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए. राइट, ओके. सो उज़ैर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस किस तरह से मैनेज होती रही है? हम रिक्रूटमेंट से आगे आते हैं तो परफॉर्मेंस पे हम आ जाते हैं या एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे बात आ जाती है. So what's your take on that? How did your company manage that? So over to you, Uzair. थैंक यू सो मच. मैं यही कहूंगा कि परफॉर्मेंस के लिए हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, वो KPIs डिफाइन की हुई हैं, लेकिन चूंकि मैं सेल्स साइड पे हूं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सेल्स नंबर्स पे होती है कि हमने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए, या अगर नहीं किए तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. सो मेरे हिसाब से ब्रिक एंड मॉर्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिसेस हैं उस पर काम करना ज्यादा फिजिबल है रादर टू वर्क रिमोटली, क्योंकि जब आप एक तो कॉर्पोरेट कल्चर होता है, फिर एक टाइम बॉन्डिंग होती है. अब हमारे कस्टमर्स हैं क्वेरीज रेज करते हैं, वी हैव टू रिस्पॉन्ड दोस क्वेरीज. सो रिमोट आवर्स में वो जो है कभी रात को क्वेरी आ रही है, कभी किस टाइम आ रही है. ऑफिस आवर्स के अंदर जो है दे विल फॉलो द डेकोरम ऑफ ऑफिस टाइमिंग 8 to 5 और 9 to 6. तो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए यही है कि वो जो है हमारी सेल्स की परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नंबर्स होती है. इट्स नॉट अ नंबर क्रंचिंग एक्सरसाइज, मोर ऑफ. तो अगर हम टारगेट्स अचीव कर रहे हैं सो वी आर पोटेंशियल फॉर आवर कंपनी. अच्छा, सही है. ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको नहीं मैं बता सकता. राइट, ओके, आई गेट दैट. अच्छा, तो बेसिकली मैं आप सब में से, क्योंकि अब हम लोग चले परफॉर्मेंस में साथ बात कर रहे हैं, सिंस हमारी जो कंपनी थी, हम लोग अगर बात करते हैं ना, हम लोगों ने ड्यूरिंग द कोविड पीरियड या ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम काफी हायरिंग्स की है. बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि हमारी बहुत ज्यादा हायरिंग जो है वो ड्यूरिंग द कोविड टाइम रही है. उसमें हम लोगों ने फिर वर्चुअल इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, बिकॉज हम अभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं, सॉरी, वर्क फ्रॉम ऑफिस को हमने प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं किया. अभी भी हमारी बहुत सारी टीम्स वर्क फ्रॉम होम पे ही काम कर रही है. तो एनी वन ऑफ यू कैन लाइक गिव अस एन आइडिया, आप लोगों ने अगर रिक्रूटमेंट की है, कैसे की है? सिंस बहुत सारे, अभी जैसे सायरा भी बता रही थी, उन्होंने रिक्रूटमेंट होल्ड पे रखी हुई थी, बाकी में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई या फुल टाइम नहीं हुए, पार्ट टाइम हुए हैं. सो आई वुड लाइक टू नो और आई वुड लाइक टू हैव एन आइडिया कि अगर किसी ने किए हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. सिंस हमने किए हैं, वी वेंट फॉर वर्चुअल इंटरव्यूज, हम अभी भी वर्चुअल इंटरव्यूज ही कर रहे हैं. हम लोग जो है वो स्काइप के ऊपर या जूम के ऊपर इंटरव्यूज दे रहे हैं और उसी की बेसिस पे फिर वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे ही फुल टाइम हायर कर रहे हैं लोगों को. यस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि हम लोग फ्रेशर्स हायर नहीं करते, हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हैं ज्यादातर. हमें क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको मार्केट में इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड है, उनका एक्सपीरियंस भी है, एंड देन हम उनको अपने साथ इंगेज कर लेते हैं. सो एनी वन ऑफ यू जो मुझे थोड़ा आइडिया देकर आपने रिक्रूटमेंट की है, तो हाउ डिड यू कंटिन्यू विद दैट? बिकॉज मोस्टली ने शायद कम की है या नहीं की. तो एनी वन ऑफ यू हु वुड लाइक टू I'd like to comment on it. So basically, जब हम अपने recruitment की बात कर रहे हैं, so we have a dedicated recruitment department which is separate from HR. So we consider recruitment as a sales strategy. उसके अंदर so we are using application tracking systems.
Then we have our Trello and Slack for the coordination, etc. So in the application tracking system, हम अपने सारे swim lanes बनाएंगे, हम candidates system fabric move करते रहते हैं, so that there is a visibility from everyone. And now when we're talking about recruitment, उसके अंदर देखें कुछ challenges भी हैं और कुछ अच्छी चीजें भी हैं. पहले मैं बताता हूँ एक कंपनी के लिए रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज है. रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंज है, एम्प्लॉय रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज मेरी एक बंदे से बातचीत हुई, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मैंने उसे कहा यार तुमने ये चीज ठीक नहीं की, तुम्हें ये डिलीवर करना चाहिए था. वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एज अ फीडबैक, वो उस पर एक नेगेटिवली उसको परसीव करेगा, और उसी टाइम जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो सम अदर कंपनी माइट अप्रोच हिम एंड से कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल. So they'll be like, okay, I had a bad day. So instead of reflecting back, I'll switch the job. So they'll go back to that recruiter who has reached out to them and say, "हाँ मुझे बताओ क्या offer है." Then what happens is that because it was all digital, so the companies would share a digital offer letter to that employee. Now then that employee would take that offer letter from that company to his current employer and say कि देखिए जी आपने मेरे साथ गलत किया था, तो मुझे ये ऑफर आ गई है, अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं. So that's a retention issue. So that's one side of the equation. The other side, from a company's perspective, again talking about recruitment, is जब आप digital दिए हैं, so digital के अंदर मतलब ये है कि instead of focusing on an individual, you focus on the department. Now the Slack channels or the Trello boards are designed for departments. A marketing department, HR department, recruitment department. अब उसके अंदर because you're working remote, so you can't have one-on-one conversation all the time, जो आप एक office environment में एक बंदे के साथ कर सकते हैं. So when you provide again a feedback to, for example, एक offer letter है, offer letter के अंदर अगर आपने एक बंदे की salary गलत लिख दी है, आपने जैसे उसको 1 लाख रुपए देना था, आपने 1.5 लाख रुपए मेंशन कर दिया, और कोई उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि यार ये 1.5 लाख नहीं था, लाख था. अब वो चूंकि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को विजिबिलिटी जा रही है, नॉट एन इंडिविजुअल, सो दे गेट ऑफेंडेड कि आपने चीज मुझे इंडिविजुअली आके क्यों नहीं बताई, या मुझे इंडिविजुअली कॉल करके बता देते. So you know, so the tools are enabling too, but at the same time tools are also kind of demotivating the people, because the transparency has increased on a much broader level. You know, that's my take on the recruitment in the last 1 year that I've experienced. अच्छा फिल्जा, I just want to add इसमें थोड़ा सा, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, I'm sorry मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा. अच्छा इसमें देखिए बात यह है कि इसी को आगे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे. The question that I would like to ask to the panelists होता ये है, जब मैं I want to share the facts. Facts ये हैं, I was having a discussion with one of the director of a well-renowned company. उसके साथ मेरी बात चल रही थी, रोजी की हम बात करें, तो उन्होंने कहा थी कि मैंने कहा क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है रोजी, क्या हो रहा है. कहते हैं हसन भाई 1300 पोजीशन है हमारे पास. मैंने कहा कितनी? कहते 1300. तो मैंने कहा मतलब बड़ी अच्छी है. कहते 1300 में से ना 1200 जो है ना वो टेक्निकल है और 100 नॉन टेक्निकल है. अच्छा मैं इसलिए आपको ये डाटा बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है टेक सेक्टर में लोगों के लिए. दूसरी बात हम कर लें, क्योंकि आई एम बेस्ड गुलबर्ग की रेडियस में 112 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं. 112 में से कोई तकरीबन कोई 80-70 तो ना कर रहे हो, कोई 30-40 तो हायरिंग कर ही रहे होंगे. तो हायरिंग इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस. अब हम बात करते हैं, जो कि मेरा अगला सवाल भी है आप लोगों से. अब देखिए, आई हैव टू आस्क कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, but this is the questions. I have to ask the real time questions. किसी एम्प्लॉय को जब आप कोई बात करते हैं, सारी चीजें कहते हैं, फिजान की बातें को हम आगे बढ़ाएंगे, वो क्या करता है? वो कहता है अच्छा ठीक है तुमने मुझे कहा. कोई भी एम्प्लॉय ना मॉनिटर होना या ट्रैक होना पसंद नहीं करता है. इट्स अ ह्यूमन साइकी. वो ये कहता है ना फ्रंट एंड पे आके कि जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप आई मेरी गलती निकालें, तो आई एम सॉरी. मतलब ऐसा नहीं होता, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और बहुत बड़ा आपको हौसला चाहिए होता है. सो ऐसा नहीं होता. बट दीज आर द वे. अब वो जिस तरह भी ट्रेलो पे बाकी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो होता ही है वो लोग कहते हैं यार कि देखो मुझे शायद आके बताया नहीं या मुझे आके कहा नहीं है, तो लोग मॉनिटर ट्रैक होना पसंद नहीं करते. मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि देखें, अगर इस तरह के टूल्स अगर हम यूज कर भी रहे हैं
और हम उनको इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसके हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो लोग करते क्या है? अब टेक वाला बंदा करेगा क्या? वो करेगा ये कि आपको कुछ नहीं कहेगा कि जी के आपने उससे कहा, उसको बुरा लग गया, वो क्या करेगा? वो चुप करके ना एक और जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देगा, आप ही का लैपटॉप यूज करेगा, आपका इंटरनेट यूज करेगा, सारी चीजें आप ही यूज करेगा, वहां से अप्लाई करेगा और उसको जॉब मिल जाएगी। So, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, सो वुड लाइक टू नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन इट कि जी अगर ऐसा है, ठीक है, एक प्रॉब्लम आ गई, हमें समझ आ गई कि यार ये प्रॉब्लम है ना, व्हाट इज द सोल्यूशन? हम चाहते हैं कि एक टॉप परफॉर्मर के साथ हम काम करना चाह रहे हैं, हम उसको रिटेन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड का मसला है या इस किस्म के इश्यूज हैं। नाउ हाउ वी हैव टू फिक्स? अगर हम उसे कहते हैं कि तुमने नहीं किया, वो कहता है अच्छा ये लो भाई, ये जॉब पड़ी है तुम्हारी, आई एम गोइंग, उससे हमारा क्लाइंट भी जाता है, उससे हमारे पैसे भी जाते हैं, उससे हम, और हमने उस पर टाइम भी स्पेंड किया होता है, उस पर हमने मेहनत की होती है। तो हाउ वी हैव टू कोप अप दिस चैलेंज? आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम फुरकान रहमान। राइट, हाँ, ये आपने आपने काफी अच्छा पॉइंट राइज किया, और ऑब्वियसली इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, और लोग ऑब्वियसली दे डोंट लाइक बीइंग ट्रैक्ड, लेकिन एक और चक्कर आ जाता है द मेथोडोलॉजी। एंड पर्सनली वर्किंग इन द टेक सेक्टर माई सेल्फ, एक और भी चीज आ जाती है कि आवर मार्केट टीम इज यूजिंग ट्रेलो, whereas our development team is using Jira. तो वो एक वो आ जाती है कि whether you're using Kanban or you're using an agile methodology, if you're going for sprints or you're just going for a continuous improvement. तो वो वाली एक और चैलेंज है काफी, जो आई गेस bringing everyone to the same platform और उनको फिर explain करना why you have to use it. और फिर obviously एक बात टाइम शीट्स की भी बात आ जाती है कि as you're doing task, तुमने उसमें टाइम ऐड करना है, एंड इफ यू फॉरगेट इट, फिर लोग करते हैं कि दे जस्ट विंग इट एंड दे से ओह या मैंने ये काम किया था, जस्ट बेस्ड ऑन देयर मेमोरी, व्हिच इज नॉट रियली एक्यूरेट, स्पेशली इफ यू आर बेस्ड ऑन अ मॉडल के आपने अपने प्रपोजल्स बनाने, सॉरी, आपने एस्टिमेशंस करनी है बेस्ड ऑन कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या थे, whereas in the true sense you're not really doing it accurately. तो वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो आई गेस ये भी एक फैक्टर है कि हर किसी को एक टूल पे लाना, whereas they're used to different ways of working, वो बहुत ज्यादा काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली मार्केटिंग को आप जीरा पे नहीं ला सकते, और यू कांट डू इट द अदर वे अराउंड, तो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। एंड आई गेस when you're choosing the tools to work with, just ensure okay integration is seamless, especially like Trello and Jira are like still from the same company, Atlassian, so they work well together, but it may not be the case if you're using many different tools from many different countries. So I guess I always put that in consideration if you're picking the tools to use. Yeah. Sorry, Furkan, मैं आपकी चीज में ऐड करना चाहूंगा कि I agree with what you are saying, but I call that to be a leadership dilemma. Now the leadership team है ना, उनको ट्रेलो भी यूज करना पड़ रहा है, उनको जीरा भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी यूज करने पड़ रहे हैं, उनको पेरोल सिस्टम भी यूज करने पड़ रहे हैं. So they have to be very well versed around multiple tools. So they have to shift from one mindset of using Trello for the marketing team and switching to Jira for the tech team. So this switching that the leadership team has to go through, I think that's really challenging. And then making yourself on top of it. So leadership team को credit इस चीज का जरूर जाता है कि they are very flexible in moving from one tool to another. But when you are implementing a specific tool in a department which only has to stick to one tool, there is a lot of resistance कि हम इसको क्यों use करें. हालांकि leadership team is switching from one tool to another. Now, for example, talk about me. I am using one tool for our bookkeeping, one tool for application tracking system, that is recruitment, one tool for HR, one for attendance, Trello, and then Jira. So, it's just too much transition happening. So I agree with what you were saying. Agree. I'd like to carry on. Sorry. You want to add something? Yeah, please, go ahead. I didn't mean to cut you there. So, carrying on from the discussion of recruiting itself, and then managing and tracking, and Fazan brought up a point where you share feedback and someone might not like it. So, I feel that then again, boiling down, it has to do with the gender psyche and human nature here.
I do not, again, Hassan, you mentioned that no one wants to take feedback with you. But then again, without taking feedback, you won't be able to perform the way you're supposed to. And that's what leadership is there for. To guide with the way. Okay? It's not that you're being pinpointed at all times. यार आप micromanage कर रहे हैं, आप गलतियां निकाल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. But even in an office environment, if someone messes up, you have every right to go up and tell them, hey, you've done this wrong. How can I help you do it better the next time? So again, it boils down to a perception of how you're taking that feedback. And yes, seconding both of your points, people do go out and find other opportunities. Achha, Ahmed, I just want to add in your discussion, I'm sorry for interruption. देखो, there is a difference of culture. अमेरिका में आप गलती निकालेंगे तो वो आपको कहेगा थैंक यू. अगर देसी कोई गलती निकालेगा, अच्छा तुमने मेरी गलती निकाली है, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ कि गलती होती क्या है. वो क्या करता है, उसके पास एक लंबी लिस्ट होती है जो उसने की होती है. आप एक गलती निकालते हैं, वो कहता है देखा मैंने तो 10 काम भी किए थे, ये वाले काम नहीं तुमने देखे. तो आई मीन देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस. सो एग्रीड, द फिजान हैज राइटली पॉइंटेड. सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लीडरशिप का है और कल्चर है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि आप उसको किस तरह से चला रहे हैं. मतलब आप कंपैटिटर्स भी पैदा कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं एम्प्लॉइज की. अब आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने कैसे चलाना है. तो राइटली सेड, तो ये वाला एक डिफरेंस तो आ रहा है. सॉरी फिजा, मैंने बीच में जंपिंग. देखिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो चीज नोट की है स्टार्टअप्स के साथ, स्टार्टअप्स को ज्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते. और अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं एक यंग सीईओ हूँ तो मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होगा, लेकिन जो मैंने पर्सन्स हायर किए हैं वो प्रोबेबली 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस के भी होंगे. समटाइम्स दे डोंट टेक मी टू मच सीरियसली. उन्हें लगता है कि उन्हें हमसे बहुत ज्यादा काम आता है या वो अपने आप को समझते हैं वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है. वो हमारे काफी पॉइंट्स को निगलेक्ट भी करते हैं कि नहीं आपको तो ये चीज पता ही नहीं. एंड मैंने पिछले साल में चीज बहुत ज्यादा फेस भी की है कि मैंने अपने एम्प्लॉय से एक जॉब बहुत सुना है कि सर ये काम तो हो ही नहीं सकता. लाइक कि हम किसी भी लैंग्वेज में हम अब ये बात आईटी प्रोफेशनल होकर हम कभी नहीं कह सकते कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने ये बात बहुत दफा सुनी है. तो मैं इस पॉइंट को ऐड करूंगा कि हमारे एम्प्लॉयज को हमें संभालने में एक मसला ये भी आता है जब वो अपने आप को समझने लग जाते हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया या वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गए. चले अगला सवाल इसी को कर लेते हैं आपसे. और मुझे ये बताइए कि हाउ टू फिक्स द नेगेटिव एटीट्यूड, ये जो अनसर्टेनिटी में आ गया है एम्प्लॉइज का. चले बताइए, नाउ लाइक टू नो अबाउट इट. इत्तेफाक योर पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से इस नेगेटिव एटीट्यूड को जो है ना वो फिक्स किया जाए. इस पर थोड़ी सी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन एक आपसे शो करता हूँ कि आई हैव टोटल 17 years वर्किंग एक्सपीरियंस. हमने ना एम्प्लॉय का जर्नी देखना है. वो जब आता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने आप उसको इतना पैम्पर्ड करते हैं, 4 महीने कहते हैं वाओ तुम्हारे बगैर तो इदारा चल ही नहीं सकता, यू आर ऑसम, यू आर सुपर. 4 महीने 5 महीने आप उसको किंग बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का. वो कहता है अच्छा यार ये तो मैं तो जबरदस्त, मतलब उसको तो लगता है कि मेरे बगैर तो अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ हो ही नहीं सकती. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द रोल, द लीडरशिप रोल. मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 महीने आप 4 महीने उसका वर्क प्लान ले लें उससे. उसको बताएं भाई कि 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है. एक मॉडल है दैट इज मा मॉडल, मींस एबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. आप मींस दें, एबिलिटी उसमें है एंड देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी पार्ट. फिर आप तक एक्सपेक्टेशन होता ये है कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सेट कर देते हैं. 4 महीने 5 महीने उसको पैम्पर्ड करते हैं, उसको आदत पड़ जाती है. 6ठे महीने आप उससे पूछते हैं क्या हुआ, वो कहता है 5 महीने 6 महीने तो मुझे शाबाशी मिली, अभी मुझसे पूछ रहे क्या हुआ. तो वो क्या हुआ वाला एटीट्यूड और वो सारी चीजें जो है ना वो फिर आपको ना एक सिचुएशन में क्रिएट ले जाती हैं. उस सिचुएशन को आई डोंट नो, दिस इज माय एक्सपीरियंस. आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि वाकई ऐसा है. मैंने तो अपने 17 साल के करियर में यही देखा है कि इसी तरह होता है और एक्सपेक्टेशंस सेट कर ली जाती हैं और 7-8 महीने के बाद वो बंदा कोलैप्स कर जाता है. इन सम केसेस आई हैव सीन दैट. वी लाइक टू नो अबाउट इट, क्योंकि मैं थोड़ा सा हमने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली, तो मैं ही नहीं चाहता कि वन साइडेड सेशन हम करें, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ताकि ये जो डिस्कशन है ये हेल्दी डिस्कशन है और ये दोनों के लिए. इत्तेसाम, ओवर टू यू. सर आपका पॉइंट बहुत वैलिड है.
बेसिकली हम सारे गलती यही करते हैं कि हम लोग अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, जैसे कि आप समझे, हम अगर एक नई टेक्नोलॉजी आपने स्टार्ट किया, उसमें आपने 2 एम्प्लॉयज रखे हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा उन पर रिलाई करते हैं। और मैं आपका एक पॉइंट से जरूर एग्री करूंगा, जो आपने पैम्परिंग वाली बात की, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मसला बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने ये फेस किया, क्योंकि हमारे टीम लीड्स ने उन्हें कुछ ज्यादा पैम्पर भी करने लगे कि ये आ गए हैं जी, ये हमारा साथ देंगे। तो एक टाइम में उन्होंने समझने लगे कि कंपनी हमारे बगैर चल ही नहीं सकती। इससे जो एक पहले भी पॉइंट एक रेज हुआ था कि हमारा क्लाइंट भी जाया होता है और हमारा काम भी जाया होता है। तो ये मसला मैंने बहुत ज्यादा फेस किया, लेकिन इसका भी बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप हर बंदे को एक सेम लेवल पे लेकर रखिए। आपने किसी बंदे को ज्यादा सुपीरियरिटी नहीं देनी, किसी बंदे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे आपको यही समझेंगे कि आप फॉर ग्रांटेड हो। आपने सिर्फ मंथ के एंड पे उन्हें उसकी सैलरी दे देनी है, आप उनसे काम करना आप पूछें, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझेंगे। बजाय इसका मैंने एक वायबल सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने डे टू डे अपडेट्स ज्यादा लेनी शुरू कर दी। खुद जाके मैंने हर काम को खुद चेक किया, और जिसमें जो बग्स थे मैंने टेस्टिंग का काम खुद किया, और हर बंदे का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी मैंने हर एक की फाइल बना के उसे दी कि आप में ये इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद उनके एटीट्यूड में मैंने एक चेंज देखी, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब मैं उन्हें देखूंगा तो वो काम सही तरह करेंगे। और बजाय इसके कि हम अपने किसी भी टीम मेंबर पे, चाहे हमारा कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ही हो, उस पर भी अपना पूरा काम ना छोड़े, हमें उस पर भी थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, वरना सब आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपका बहुत ज्यादा काम खराब हो सकता है। I just want to add one point over here. आपने जो point अभी raise किया था ना, ये almost yes, I'm also facing this point as well. मुझे लगता है कि इस पॉइंट का बेटर सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपके पास जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको बजाय बहुत ज्यादा हाइप अप करने की, उसकी बहुत हाइप क्रिएट करने की, यू हैव टू गिव वैल्यूज टू देयर प्रोडक्ट मैनेजर्स। हमारे में आपको पता है बड़े स्ट्रेट सी एक एग्जांपल है कि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। शायद ये आपके के लिए बड़ी फिट होगी। माय क्वेश्चन इज कि जब हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय आता है तो हम पुराने एम्प्लॉयज को जो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी अथॉरिटीज को क्यों चैलेंज करने लग जाते हैं। आपके लाइक मैं मानती हूँ ही इज अ न्यू एडिशन, ही इज द वैल्यू एडिशन पर्सन, लेकिन जो वैल्यू ऑलरेडी आपके ओल्ड एम्प्लॉयज के जरिए या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के जरिए हो चुकी है, वो न्यू एम्प्लॉय पे नहीं हो सकती, इतनी आसानी से नहीं हो सकती। आप जब तक अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एक एक इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एक वैल्यू नहीं देंगे, एक मुकाम नहीं देंगे, अगर उनकी अथॉरिटीज को ही अगर आप चैलेंज करना शुरू कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए खास बेनिफिशियल चीज नहीं होगी। एक वक्त पे आके न्यू एम्प्लॉय को ये लगना शुरू हो जाएगा कि ओके फाइन, मेरे पास जो बंदा आ रहा है इसका मतलब है कि जितनी भी इंपॉर्टेंस है मेरे बाद उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी एक वक्त में आके मैं इस वैल्यू पे आ जाऊंगा। तो ये जो एग्जांपल हम सेट कर रहे होते हैं ना, अगला बंदा लाइक जो न्यू पर्सन होता है, he has senses, उसको भी पता होता है कि यार अब यानी कि एक वक्त कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, यानी कि मेरा टाइम हो जाएगा, तो इसका मतलब कि मैं कंपनी के लिए कुछ भी नहीं लूंगा। अच्छा I just want to add on it, क्योंकि अभी we are running out of time, 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं और बाकी गेस्ट की भी कमिटमेंट्स हैं। अच्छा देखिए, I just want to add few line। देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, one is people oriented and second is system oriented। ये जो मसले मसाइल हमें आएंगे ना, ये पीपल ओरिएंटेड में आएंगे, जहां लोगों के पास कंट्रोल होएगा और वो इदारों को चला रहे होंगे। आपने अक्सर देखा है कि वो किचन कैबिनेट होती है जो कि ऊपर बड़े क्लोज होती है और फीडबैक दे रही होती है कि ये करना है, इस तरह से करना है। ऊपर इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्होंने नीचे सारी चीजें देखनी होती हैं और करना होता है अपने हिसाब किताब से। तो ये हमें वहां पर इश्यूज जो है ना वहां पर आते हैं पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी एडवाइस ये है कि हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। अगर हमने ऑफिस पॉलिटिक्स है, हमने ये जो बात की फिजा में जो ऑफिस स्मॉल टॉक्स हैं, गॉसिपिंग से निकलना है, हम व्हाट वी आर डूइंग एट एमरल्ड लैब्स, हम लोग 1-on-1 सेशन डिफरेंट जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ वीकली बेसिस पे स्लॉट्स अवेलेबल होती है। हर एम्प्लॉय 1-on-1 सेशन करता है हर एक के साथ, जो जिसके साथ भी वो करना चाहे, एचआर के साथ करना चाहे, ऊपर हमारे सीटीओ है उनके साथ करना चाहे, सीओओ के साथ, इवन सीईओ के साथ करना चाहे, तो उससे हमें बड़ी हेल्प और सपोर्ट मिलती है कि हमारे यहाँ स्मॉल टॉक्स जो है वो नहीं होती, ऑफिस पॉलिटिक्स वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तो ये हेल्प मिलती है। उसके अलावा सिस्टम्स दैट वी आर यूजिंग व्हिच इज आल्सो वेरी हेल्पिंग अस, तो ये है। अच्छा अगला सवाल मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है सबसे, एंड दैट इज, मुझे जानना है आप सबसे, क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट्स हैं, किस तरह से एक
एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को वर्क फ्रॉम होम करके घर में बैठ के हम मेजर कर सके. व्हाट आर द टूल्स दैट वी कैन यूज. ये आपने ध्यान में रखता है कि लोग ट्रैक और मॉनिटर होना पसंद नहीं करते. तो इसलिए अगर हम टाइम डॉक्टर को निकाल दें, किसी और सिस्टम को निकाल दें, और अगर हम बात करें टूल्स के अलावा कि आप किस तरह से एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, तो वी लाइक टू नो योर एक्सपर्ट ओपिनियन. एनीवन जो वॉलंटियर करना चाहे. हसन, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि देखें, इसे हम सारे टूल्स के बगैर इस तरह मेजर कर सकते हैं कि अगर हमने अपने सारे एम्प्लॉयज का एक चार्ट बनाया हो जो कि हम यूज कर रहे थे डेली टू डेली टास्क का, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपने डेली टास्क का ट्रैक लेके देखें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉय पहले हमारे पास ऑफिस में काम कर रहा था और इतने टास्क को परफॉर्म कर सकता है, नॉट मोर देन लेस और मोर और लेस, तो हम सिर्फ उसी को ट्रैक लेके चलें तो हमें अंदाजा हो सकता है कि हमारा एक एम्प्लॉय हमारे लिए कितने हद तक प्रोडक्टिव साबित हो रहा है या उसकी वर्क परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है. तो इस तरह हम उसे बेहतर ट्रैक कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर हम उसके ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को निकाल भी दें तो हम हमारी गिट रिपोजिटरी जो यूज करते हैं, हम गिट पे जाके देख सकते हैं कि इसके आज का क्या एडअप हुआ है, तो हम इस तरह भी उनका थोड़ा ट्रैक ले सकते हैं. लेकिन एक सब बात ये है कि जब आप डेली बेसिस पे रोज इससे पूछना शुरू कर दें तो वो कहेगा, पहले तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पॉसिबल है 30-25 लोगों की, बड़े इदारों में ये पॉसिबल नहीं है. और जब आप किसी से डेली बेसिस पे ये पूछना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ जी तुमने क्या किया, तो वो फिर वही बात आ जाएगी एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कहेगा अच्छा तुम डेली मुझसे पूछ रहे हो, लेट्स हैव मैं फिर और किसी इदारे में मूव करता हूँ. सो आई डू अंडरस्टैंड कि ये सारे इश्यूज जो है वो आ सकते. एनीवन वांट टू ऐड और कमेंट ऑन इट? Furkan Rahman, I think I want to add something. अच्छा, I would like to add on this कि जो हम अभी बात कर रहे हैं टास्क मॉनिटरिंग या टास्क ट्रैकिंग की. बेसिकली I would say task monitoring, task tracking is a better word to exemplify this. इसमें ये है कि हम लोग देखिए, बिकॉज हम अभी तक हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है. इन्वोजोन में बहुत कम लोग हैं जो अभी भी हमारे वर्क फ्रॉम ऑफिस में आ रहे हैं, वरना सारा हमारा अभी तक प्रोसेसेस जो है वो वर्क फ्रॉम होम से चल रहे हैं. तो इसके लिए हमने जो इन्वोजोन में एक सॉल्यूशंस निकाले हैं, उसमें हमने क्या किया कि हमने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो है वो एक तरह से लीड बना दिया, ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली वी आर लाइक 150+ एम्प्लॉयज, तो उसमें ट्रैकिंग इंडिविजुअल करना हर बंदे की वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है. We have the project managers, the project leads, वो क्या करते हैं कि they have the track of their task. Trello है उसके लिए, जीरा है, आप Trello के ऊपर टास्क अपने सारे अपडेट कर देते हैं, एंड देन बाय द डे एंड आप उसको देख लेते हैं. आपका जो बेसिकली प्रोजेक्ट लीड है, ठीक है, आपका या जो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हमने उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया हमारे पास, बिकॉज कंसिडरिंग द साइज ऑफ द टीम एंड डेफिनेटली इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. इसी तरह से तो उसमें हमारे लिए बेहतर सोल्यूशन ये निकला कि हम मॉनिटरिंग पे नहीं जा सकते. एज हसन हैज सेड इट मेनी टाइम्स के एम्प्लॉयज नहीं प्रेफर करते, ठीक है. आप उनका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना ही देख सकते हो कि भाई काम पूरा हो रहा है, ठीक है. बिकॉज फिर वो जैसे एक पॉइंट शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं, एम्प्लॉय कहते हैं भाई डेडलाइन तो पूरी हो रही है ना, मैं आपकी डेडलाइन पे कह रहा हूँ, मैं आपकी डेडलाइन पे कह रहा हूँ. तो उस चीज से बचने के लिए फिर बात नहीं आ जाती है कि हम टास्क देखते हैं कि अच्छा हर चीज के अगर देखा जाए तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, देयर आर सम स्मॉल स्टेप्स टू दैट. So you can actually just keep track of their milestones. कि उसने कितनी देर में ये काम कर लिया या कितनी देर में ना से एटलीस्ट टाइम में कर लिया या नहीं किया, ठीक है. तो हम इस तरह से हमारे इन छोटे छोटे जो टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम Trello यूज करके इस चीज को मॉनिटर कर लेते हैं, या हमारा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज को देख लेता है कि अच्छा ठीक है ये टास्क थे, ये मेरी टीम थी, इस टीम ने इस तरह से किया कि नहीं किया. बिकॉज ऑब्वियसली फिर प्रोडक्टिविटी एंड टीम को मैनेज करते हुए इन चीजों को साथ लेके जाना फिर ज्यादा जरूरी है. एंड आई थिंक वो आप बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते और बिल्कुल खत्म भी नहीं कर सकते उस चीज को, और बहुत ज्यादा मॉनिटर भी नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉय बर्न आउट हो जाएगा. बर्न आउट का इफेक्ट बिल्कुल रियल है, उससे भी बचना है फिर आपको साथ. बिल्कुल. एक और बात आ जाती है जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन. उसमें ये आ जाता है कि यू कैन एक्चुअली स्विच हाउ यू बेसिकली आस्क पीपल एंड हाउ यू चेक ऑन देम कि वो अभी क्या करें. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने एक काम किया, यू कैन आस्क देम डू यू नीड एनी हेल्प विद दिस, व्हाट आर यू डूइंग. तो वो एक बड़ा चेंज आ जाता है कि क्योंकि हमने पर्सनली स्पोर्टेजियस पे भी ये बड़ा फील किया और हमने उससे लर्न किया. अनफॉर्चुनेटली एक को फाउंडर को जाना पड़ा कंपनी, उसके बाद लर्न किया. लेकिन बात यही आ जाती है कि हाउ यू चेक ऑन पीपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी ट्रैकिंग वगैरह तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब एंड वो एक अंडरस्टैंडेबल चीज होनी चाहिए, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम द लीडरशिप. एंड लीडरशिप को मतलब एम्प्लॉइज को ये ना लगे कि भाई हम मुर्गे हैं, हमें बस हर चीज में लगाई जा रहे हैं
और हमें तो कुछ मतलब हमें बता नहीं रहे क्यों कर रहे हैं. तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं, और ये टीम प्रोडक्टिविटी के लिए और उसके लिए, और सारों को इकट्ठा बिठा के और एक कैजुअल कन्वर्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है उस सेंस में. Okay, I just want to add a point. Actually, according to me ना, like मैंने अभी बहुत दूसरी कंपनीज का भी वर्क फ्रॉम होम देखे, अपनी कंपनी में भी करवाया, सब कुछ है. अकॉर्डिंग टू मी ना, व्हेन यू आर ऑन वर्क फ्रॉम होम, तो फिर आपको ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, इसको फिर आपको मुझे लगता है कि अबॉलिश कर देना चाहिए. बिकॉज इसका सिंपल स्ट्रेट मतलब है कि यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन योरसेल्फ एज वेल. मतलब अगर हम कभी भी एम्प्लॉय के साथ इस किस्म की बहस नहीं, किसी आर्ग्यू में जाते हैं, तो वो यही कहते हैं, अच्छा ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस पे तो आप बहुत बात कर रहे हैं, क्या आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं? एचआर का तो एक्चुअली कंपनी में कोई काम नहीं होता, तो वो बैठ के क्या काम कर रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही. पर इससे की पूरी डिस्कशंस जो मैंने देखी हैं, अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन यू आर ऑन वर्क फ्रॉम होम, या अगर आप इसकी प्रोडक्टिविटी को देखना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्स खत्म कर दें. फर्स्ट. सेकंड थिंग, यू हैव टू एम्पावर द प्रोजेक्ट मैनेजर और द हेड्स. आपको थोड़ा सा ना वो स्ट्रिक्ट होना होगा कि if we need this kind of required performance up to the mark, this kind of level, तो हमें आपसे चाहिए, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपने हमें जो रिपोर्ट करना है. जैसे कि आपने पहले बताया कि 25 से 30 लोगों की कंपनी में तो ये पॉसिबल है कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो न्यू साइज में है, दे आर 300, 400, 150, वहां पर जो ट्रैकिंग सिस्टम है घरों में आप कभी भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. तो इट्स फॉर बेटर कि लीडरशिप को जो है वो एम्पावर्ड कर दिया जाए, और जो आपका सिस्टम है उसमें अगर थोड़ी सी लीनियंसी लाई जाए, तो मेरे ख्याल से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस तो नहीं, बट यस, कम से कम 80 to 90% जो है ना, वो आप अचीव कर सकते हैं. We'd like to know the opinion on the same question from Faizan. Faizan, are you with us? The values that we are having at Emerald Lab, would you like to share some values? फैजान हमारे साथ है या नहीं? जी जरूर. So in terms of the values, what we always focus on is to build a company that is value driven instead of people oriented. So उसके में जो सबसे important मेरे लिए value है वो है transparency. And I had several discussions on that during the session too, कि हम लोग transparency को बड़ा promote करते हैं. In fact, फैजान की आवाज नहीं आ रही है, आपको आ रही है आवाज? नहीं मेरी ख्याल से कोई इशू नहीं, आई कांट हियर यू. Okay, Fazan, can you please come back? Yeah, I think it is fixing that. Yes, is it? Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Please. तो जी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम बड़ा फोकस करते हैं. ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से what we are trying to do is that we are trying to set up a wiki page for our company, जहाँ पे everything is accessible to all employees, whether that's employment contracts, whether that's staff policies, and we are even to this extent that we are even willing to share our financial performance with our employees. So transparency is something that we really value. Second चीज जिस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ वो है good judgment. So whenever anyone or any employee is coming to me and I always tell them, कोई भी अपनी decision लेनी है, are you using a good judgment? Good judgment से मुराद ये है कि आपको छुट्टी चाहिए. Let's suppose small scenario, it's your right to take a holiday, to take a vacation, but the good judgment would be that the time at which you are taking the holiday, will it compromise the effectiveness of the team? Will it compromise on the goals of the organization? या अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, so are you handing over everything appropriately to the associated team members? That's good judgment. In the same way, if you want a laptop, yes, you need a laptop to work. अगर आप मुझे कह रहे हैं मुझे लैपटॉप चाहिए, so are you getting it so that you can also do gaming on it, या सिर्फ work purpose के लिए? If you need a high-powered machine, are you using a good judgment? So that is something that we promote a lot too. Then we have the ownership. Ownership is that simple thing is don't overcommit. Commit what you can deliver, and if you've committed to it, then deliver what you have committed. So very simple. Accountability remove करें and ownership लें अपने काम की. कंपनी जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी सी कि कंपनी ने डिफरेंट लोगों को किसी वजह से हायर करते हैं, वो इसलिए हायर करते हैं क्योंकि दैट स्पेसिफिक पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु इज हायरिंग यू feels that they lack that skill.
So that is the reason they are hiring you. So instead of they guiding you how to do it, you need to guide them. Yes, sir, you brought me into recruitment or into HR or into finance. I know it better. So don't worry about it. I'll handle it. So that's about taking ownership. So these are the few values that we focus a lot at Emerald Labs. Okay. Great. Pilza, over to you. Yeah, okay. So I'd actually like to know Hassan's point of view in this, and then we can move forward because time बहुत हो रहा है, and then we can move towards concluding the session. जी Hassan, what's your point of view on this? जी मेरे ख्याल से आई थिंक कम्युनिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, अगर उसको आप अप्रिशिएट ही नहीं करते, आई थिंक सिंपल इवन स्मॉल थैंक यू भी अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोल देते हैं तो उसका काफी अच्छा डे गुजर जाता है. तो आई थिंक एप्रिसिएशन और कम्युनिकेशन की है. अच्छा, आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू लाइन ऑन हसन कमेंट्स. देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना कुछ सीईओज के साथ काम करने का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यकीन माने एक सीईओ ऐसे थे जिनको के बच्चों का नाम भी याद होता था. तो जाके सबसे पहले वो पूछते थे, यार हसन वो तुबा का क्या हाल है? नहीं कहा है यार, ये कैसे? आई मीन, तो इमोशनली आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज के साथ. और जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, जब आप उनके साथ उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो थैंक्स वाला और हाउ डू यू नीड एनी सपोर्ट, कोई हेल्प चाहिए, अच्छा मुझे बताओ घर में सब कैसे हैं, वो जो एम्पैथाइज वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये अब चल रहा है. इसको इस तरह पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज रिटेंशन शायद हम उस तरह से लोगों की ना कर पाए. रिक्रूटमेंट हम कर लेंगे, ट्रेनिंग भी हम दे देंगे, लेकिन फायदा जो है ना वो कोई और उठा लेगा. वी नीड टू हैव रिटेंशन पॉलिसीज फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. उसमें मैं फिर कहूंगा लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. और चेंज मैनेजमेंट जो है ना वो एकदम से नहीं हो सकती. आप आए या एचआर वाला आए और उसके हाथ में एक छड़ी हो, वो घुमाए हवा में और इदारा आपका ट्रांसफॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. हर एक को टाइम चाहिए होता है. जिस तरह ऊपर लोग बैठे होते हैं वो बिजनेस जनरेट करते हैं, उनको लीड्स लाने में करने में टाइम लगता है. इस तरह एचआर को जब नीचे एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको भी ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू गिव एम्पल टाइम टू द एम्प्लॉयज कि भाई ये काम करना है, इसके लिए तुम्हें जो है ना क्या मीन्स चाहिए, क्या तुम्हारे पास एबिलिटीज है, एंड देन विल सी दैट कि हम तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से कर सकते हैं. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोग करें, मैं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि जी के तो हमारे यहाँ होता ये है कि पाकिस्तान में ना थोड़ा सा ना सब्र की बड़ी, थोड़ी सी नहीं ज्यादा सब्र की कमी है. हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बस चुटकी बजाओ, बंदे को बुलाओ. रिक्रूटमेंट में ये कहा जाता है कि इसको कल से ज्वाइन करवा लो या पर्सनल ज्वाइन करो. बट वी डू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट का जो है वो प्रेशर होता है, लेकिन ये है कि समहाउ वी हैव टू कन्विंस टॉप लेवल मैनेजमेंट. सर जी देखें, अगर हमारे यहाँ से भी कोई बंदा दूसरी जगह जा रहा होगा तो हमें भी 1 मंथ का नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा ड्यू टू क्लाइंट या फिर ये सारे इश्यूज. तो वी डू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बंदा किसी और इदारे से हमारे पास आ रहा है तो उसको भी 1 मंथ का नोटिस है वहां सर्व करना पड़ेगा. तो वी हैव टू कम्युनिकेट द क्लाइंट कि भाई 1 महीने का नोटिस है इसके अंदर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे ये देखा गया है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस ज्यादा क्रिएट हुई है. और हमारे यहाँ पे टेक में कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कसूर रहा है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वो ऑफर साइन कर देते हैं, उसके बाद जिस दिन हमने क्लाइंट को कहना हो कि आज भी ज्वाइन कर रहा है, उस बंदे की कॉल आ जाती है हमें कि जी नहीं जी ये ज्वाइन नहीं कर रहा. तो वो एक सिचुएशन हमारे सामने वो क्रिएट होती है. तो आई थिंक वी हैव टू टैकल दीज ऑल काइंड ऑफ challenge. So we have to give appropriate time to everyone to इस सिचुएशन से अच्छी तरह से इसको हैंडल कर सके. ठीक है, ओवर टू यू फिजा. अच्छा, सबसे पहले तो उस क्योंकि मीटिंग में फौरन जाना है, तो आई वुड लाइक टू नो ज़रा आप कोई पॉइंट अपना ऐड करना चाहेंगे बिफोर लीविंग. वुड लव टू नो दैट. थैंक यू सो मच. मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह इतने अच्छे पॉइंट्स आ गए हैं. आई गॉट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.
Yeah, because I just by the way, your contribution was very good, and you were amazing and superb, Uzair. We really enjoyed your discussion. Thank you. Thank you for the compliments. Thank you. Player is mine. Ji Filza, you're with us? Okay, I think that Filza शायद इंटरनेट का इशू है ना, वो आ रहा है. So फुकान भाई, yeah, I'm here. okay. Actually, I my internet and ठीक है, Filza, just give me a second. Okay. Can everyone? I think Okay, your voice, guys. voice is break. Yeah. Okay. हाँ. पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में नेट अपना ठीक करते हैं, तो तब तक जरा हम थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. सो फुकान भाई फ्रॉम InvoZone, would like to know about your input कि किस तरह से आप इस पूरी डिस्कशन को देख रहे हैं. Are you with us? Unmute your mic, please. Yes, I'm with you. Okay, please continue. All right. I really appreciate the सबसे बड़े valuable points जो है वो add किए हैं. I will just try to rephrase couple of things from everyone. फुकानुर रहमान raised a very valid point. हमने लोगों से पूछना भी है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है आपकी आज की. But we need to rephrase our words. Like straightforwardly मैं आपसे नहीं पूछ सकती कि what is going on or something like that. So we need to come from the another angle, another perspective. कि is there anything जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं ताकि we can achieve the deadline जो आपने आज है या जो. So and second thing जो कि अगर वो कंपनी का साइज अगर 150 प्लस है, even going beyond the 50 head count, आप हर बंदे को इंडिविजुअली नहीं मॉनिटर कर सकते. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक हायरार्की सेटअप करनी पड़ती है, टीम लीड, मैनेजर्स, और फिर उन टीम लीड्स को अनेबल करना पड़ता है विद टू थिंग्स, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो दे शुड बी हैविंग द अथॉरिटी टू मॉनिटर एंड अकाउंटेबिलिटी के वो बंदे को जो आपकी टीम मेंबर्स हैं जिनको आपने बड़ी सिलेक्टिवली पिक किया है इंडस्ट्री से, उनको लूज तो नहीं कर देंगे. और अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू deliver the stuff as well on the other hand. और I will like rephrase the word जैसे आपने कहा कि वो we cannot ask them about like a lot of questions और वो वरना क्या करेंगे, they will switch the job. तो ये एक awareness भी build करने की जरूरत है as the HR people, as the leadership. हमने अपने resources में कि almost every company is running for the productivity and outcome. तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो माइट भी आपको थोड़ा पे रेज मिल जाए, बट यू विल स्टिल बी फेसिंग द मोर और लेस सेम अकाउंटेबिलिटी बिकॉज़ यू हैव टू डिलीवर. दूसरी कंपनी ने आपको फ्री में तो नहीं ऑफ कोर्स पे कर देना, तो यू विल बी फेसिंग द सेम थिंग. तो अगर ये अवेयरनेस आ जाएगी तो मुझे ये मैं समझ जाऊंगा एज एन एम्प्लॉय कि मैं इस बॉक्स से निकल के इस बॉक्स में जाऊंगा तो मेरे लिए ये अकाउंटेबिलिटी और जो क्वेश्चनिंग है ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगी. आई विल स्टिल नीड टू बी फेसिंग दिस. और तीसरे नंबर पे जो डिजिटल टूल्स ने हमें एनेबल किया है बहुत ज्यादा पेंडेमिक और इससे पहले भी, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हुए हैं. सिचुएशन ने हमें पुश कर दिया अगर उन चीजों को यूज करने के लिए. तो अब जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती नजर आनी चाहिए रादर देन कि हम वही प्रोडक्टिविटी हमारे पास हो जो पहले थी. अच्छा, इसमें जो 2-3 चीजें हैं जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन InvoZone ने कैसे इनको डील किया. आई विल लीव दैट विद Filza. He will be like elaborating those points quickly after my conversation कि वो हमने कैसे उन चीजों को हैंडल किया. We did a lot out of the box stuff जो कि अनट्रेडिशनल था, जो कि पाकिस्तान में कोई और कंपनी जो है वो नहीं कर रही थी पहले, बट we introduced them out. और जो है ना उसमें से कुछ चीजें जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे ड्यूरिंग द वर्क फ्रॉम होम, अभी हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं बिकॉज इट इज वर्किंग आउट फॉर अस. पार्शियली वर्क फ्रॉम होम है. अगर कोई घर में किसी का इलेक्ट्रिसिटी आउटेज या इंटरनेट इश्यूज या फैमिली मैटर्स हैं तो ही कैन और शी कैन जॉइन द ऑफिस इफ ही नीड्स टू और शी नीड्स टू. अदरवाइज ही इज फ्री टू वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम कॉफी प्लेस, वर्क फ्रॉम पार्क, और जहाँ से मर्जी ही और शी कैन वर्क एज फार एज ही इज डूइंग द वर्क. और लाइक अगेन वही हमारे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें टीम लीड और थर्ड मैनेजर दे आर अकाउंटेबल एंड हैव द अथॉरिटी टू मैनेज देयर स्मॉलर चंक ऑफ द टीम आउट ऑफ द बिगर कंपनी साइज. तो उसमें जो चीजें कुछ हैं जो लाइक हमारी HR टीम ने क्या स्टार्ट किया टू कीप एवरीवन प्रोडक्टिव.
बहुत सारी चीजें फीबा जो है वो उनको हाईलाइट करेंगे। कुछ चीजें हमारे एचआर फोक्स ने क्या कि वी स्टार्टेड स्पेंडिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डूइंग सम सेशंस टू एनेबल एवरीवन टू टीच देम विद द मेथड्स के आपने घर में रहते हुए कैसे प्रोडक्टिव रहना है। आपने बाकी जो आपकी डिस्ट्रैक्शन हैं घर में, फैमिली के मैटर्स हैं जो चल रहे हैं, उनके साथ लिव कैसे करना है, मतलब उनको उनके साथ आपने काम भी करना है, उनके डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है। तो व्हाट वी आवर टीम स्टार्टेड डिलीवरिंग सम ट्रेनिंग सेशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमने की, वो स्टार्टेड डिलीवरिंग सम सेशंस कि आपने फूड एंड ग्रोसरीज कैसे ऑनलाइन जो है ना वो डिलीवर करवानी है। तो ऑफ कोर्स दिस थिंग इज वेरी न्यू इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे फूड एंड ग्रोसरीज जो है वो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं खुद जाकर लाना प्रेफर करते हैं। तो देयर आर मेनी रीजन। कुछ लोग समझते हैं कि आउटिंग भी हो जाती है, कुछ लोग समझते हैं कि प्राइसेस जो है वो कम हो जाती है, बट दे आर नॉट काउंटिंग द टाइम एंड कॉस्ट दे आर स्पेंडिंग इन द कम्यूट व्हाइल दे आर गोइंग फॉर द ग्रोसरीज एंड फूड। तो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग द पीपल के कि एक तो उससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपका बहुत ज्यादा बाहर जाना नहीं होगा, जिससे जो कि रिड्यूस करेगा बिगर चीज को, पेंडेमिक के जो स्प्रेड आउट जो है उसको कम करेगा। और दूसरा जो है इससे ये होगा कि आप घर में रहेंगे, आपका टाइम सेव होगा, तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन योर वर्क। एंड तीसरे नंबर पे इससे ये भी बेनिफिट होगा कि आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विल लाइक दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स, बट आईटी इंडस्ट्री बिकॉज इन सारी फूड और ग्रोसरी एप्स के पीछे भी आईटी इंडस्ट्री ही है। तो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा श्रिंक है पहले, अब वो और ज्यादा जो है वो ग्रो करेगी, ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग एनी स्टेक इन दैट एरिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने एज मलेशिया में रहते हुए और ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी ग्लोबली ये बड़ी चीज ऑब्जर्व की है, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट। That is not still in the Pakistan, but I hope someone will be rising very soon, popping up very soon from the like entrepreneurship perspective. और वो भी अगर हमारा जो है मेजर चंक फ्रॉम द होम हो जाए डॉक्टर अपॉइंटमेंट इधर सब, तो उससे ये चीज और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो आई विल कम टू अनदर पॉइंट जो सबसे आखिर में जिस चीज पे मैं जो है वो आना चाह रहा था, मेजरली कम डिस्कस हुई है, मुझे ये है कि आप पेंडेमिक के बाद जब वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा और लोग वापस आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। तो द सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होगा कि अब सब लोग बहुत कैजुअल हो चुके होंगे, उनको आदत पड़ चुकी होगी, लाइक गंदी आदतें पड़ चुकी होंगी कि आई लाइक सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लाइक क्योंकि वो क्या हो गया कि अब वो घर में काम कर करके उनके लिए सीट पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, टिकट लाइक दे कैन नॉट स्टे लॉन्गर। और फिर क्या होगा कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से हेजिटेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज दे आर सिटिंग एट होम, चाहे वो क्लासेस लेट ही लग रहे हैं, बट वो दैट इज नॉट वेरी सीरियस। तो अभी ये जो चीजें हैं ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स को एक बहुत ज्यादा जो है ना, अगर किसी कंपनी का क्वारंटीन थोड़े अरसे का भी रहा है, कम अरसे का भी रहा है, लाइक वन मंथ और समथिंग, स्टिल दे विल बी फेसिंग दिस कैजुअल एटीट्यूड फ्रॉम द न्यू हायरिंग, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग आ रहे होंगे उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड जो है ना वो देखने को मिलेगा कि वो लोग अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी के रिसोर्सेज तो ऑफ कोर्स ज्यादा देर वर्क फ्रॉम होम नहीं करते रहे हैं। तो एज द HR leadership and as the entrepreneurship side and the business leadership, we all are going to face this kind of challenges कि जी हमारे resources बहुत ज्यादा कैजुअल हैं, even working from office। तो जो है ये जो है ना बड़ी जो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बिल्ड अप होने आ रही है नियर फ्यूचर में। अलॉन्ग विद दिस ऑल पॉजिटिव स्टफ, इसमें मैंने अगेन बताया कि हमारा जो IT सेक्टर है, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी एंड clinics and lab reports वगैरह, और lab reports still you can like do that online, और आपका सैंपल घर से कलेक्ट हो जाते हैं in practice in Pakistan। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर रहे, but we are spreading these messages out, we are trying to train our resources internally कि वो जो है ना इन सारी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करना प्रेफर करें rather than going outside to like handle a lot of stuff। इसके अलावा एक बंडल ऑफ लिस्ट है, बंडल ऑफ थिंग्स हैं जो I will pass that stuff to Atiba so that we can carry forward and share those things with us। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारा बताया। अच्छा, जैसे कि वो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हम अभी तक वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा
कुछ ऐसी जो है वो चीजें यूज की है, या हमने कुछ न्यू पॉलिसीज भी डिवाइस की है। जैसे सबसे पहले तो मैं इसी को शेयर करती हूँ, जो हमारे इंटरेक्टिव सेशंस हमने ऑफिस में स्टार्ट किए, कि हमने क्या किया है, हमने एम्प्लॉयज के लिए जो है वो सेशंस रखने शुरू कर दिए। ठीक है, उन सेशंस का हमें क्या फायदा हुआ कि हर एम्प्लॉय को जो है वो एक मौका मिल सका कि उन्होंने नई चीजें लर्न की, जैसे ग्रोसरी कैसे बाय करनी है, ऑनलाइन क्या चीजें कैसे ऑर्डर करनी है, क्या करना है। वो क्या हुआ कि एक तो ये था कि जो लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे ना, वो उन्हें लगा कि हाँ उन्हें कंपनी ने ऑन किया हुआ है। ठीक है, दे वर अ पार्ट ऑफ इट। उन लोगों के लिए ज्यादा ये इजी रहा, कंपनी हमें एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, एंड देन फिर जैसे अक्सर लोगों का इश्यू होता है कि घर पे इन्वायरमेंट ऐसा है, काम नहीं हो रहा, बेड पे बैठ के कैसे काम करे, तो नींद आने लग जाती है, या कैजुअल सा एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो हर बंदे का कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट आ जाता है। मैं सो गया था, ग्रोसरी लेने गया था तो कोई सो भी गया था, ये भी हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो है वो निकाला, पर्सनल डेवलपमेंट फंड इंट्रोड्यूस करवा दिया कंपनी में। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि कोई एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसको सीट चाहिए, क्योंकि आई डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग इन माय बेड और इन माय सोफा और इन माय काउच और व्हाटएवर इट इज, आई नीड अ प्रॉपर चेयर। तो हमने उसको चेयर ले दी। ठीक है, अगर किसी को कोई वर्क स्टेशन चाहिए तो उसको घर पे उसके वर्क स्टेशन बाय कर दिया, और ये कंपनी के एसेट्स नहीं है, ये एम्प्लॉय का ही एसेट है। हमने उस चीज को प्रॉपर्ली एम्प्लॉय को ही एलोकेट कर दिया कि ठीक है, यू वांट टू बाय दिस, गो अहेड, आपको क्या चाहिए आप बताएं, एंड विल अरेंज दैट। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें शायद वैसे अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती, बट अगर एज एन एम्प्लॉय, अगर मैं भी एज एन एम्प्लॉय बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल बात ना करूँ और एज एन एम्प्लॉय बात करूँ, तो ये चीजें मैटर करती हैं। लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, एंड अगर मेरी कंपनी इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है कि ओके यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कांट कम टू ऑफिस, यू नीड समथिंग, जस्ट लेट अस नो। हमने फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स में भी बहुत हद तक रखी हुई है एम्प्लॉयज के लिए। यस, डेडलाइंस आर देयर, दे शुड बी मेट, डेफिनेटली वो हर जगह होता है। ठीक है, बट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि हर एम्प्लॉय को एक स्पेस मिल जाता है जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ना कि इस चीज में किसी कोई ग्रॉसरी लेने गया, कुछ करने गया, हमने उसके लिए भी उनको लीव की डिफरेंट टाइप्स दे दी, क्वार्टर लीव कर दी, शॉर्ट लीव कर दी, इन चीजों को मैनेज कर लिया। आवर्स हमने थोड़े ओपन आवर्स दे दिए कि ओके आपने इतने घंटे आपने काम करना है, आपने कोशिश करें इस विंडो में आपका काम हो जाए, एंड वी आर फाइन विद दैट। आप दरमियान में उठ के जा रहे हैं, आपने दरमियान में घंटे का ब्रेक लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, हम आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे। यस, बहुत हद तक ये लिवरेज कहीं पे गलत भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको फिर एम्प्लॉय भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, माय कंपनी इज लुकिंग आफ्टर मी, तो सॉरी आई हैव टू लुक आफ्टर फॉर देम एज वेल। तो ये चीजें हैं जो आई थिंक इन्वोजोन के लिए, हमारे लिए जो है ना, वो बहुत वर्क किए हैं ये सारी चीजें। एम्प्लॉय को कंसीडर करना बहुत वर्क किया हमारे लिए, कि जितनी हमने एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस दी है, उतनी फिर इन रिटर्न एम्प्लॉय से भी हमें इम्पोर्टेंस मिली है। एंड सिंस वी आर हायरिंग सीनियर पीपल या एक्सपीरियंस पीपल, तो फिर सीनियर और एक्सपीरियंस में ना वो फ्रेशी वाली चीज भी नहीं होती। दे नो इट बेटर कि हमने क्या करना है, या हम लोगों को किस तरह से चीजों को करना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रॉपरली एंड प्रोफेशनली उन चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम इन्वोजोन साइड, कि हम इस चीज को इस तरह से लेकर जा रहे हैं। Agreed, and it's a wonderful initiative that InvoZone is taken, and I think that देखो Filza, it's a two-way process. It's not a one process. Employees, अगर आप अपने वो कहते हैं ना रिटेल में, अगर आप कस्टमर का ख्याल रखते हैं ना, तो फिर कस्टमर्स एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं, तो एम्प्लॉइज फिर आपके कस्टमर्स का भी ख्याल रखते हैं। So like to I would like to share one example to you, a real time example. देखिए बात ये है कि I was working with one company in the capacity of head of HR. तो जो हमारे CEO थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि हमारे CFO जो है उनकी शादी है, तो हसन उनको ना हमने ना गिफ्ट देना है, कार गिफ्ट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर हमने तो ऑलरेडी एज पर इंटाइटलमेंट हमने उनको गाड़ी दी हुई है। कहते नहीं, जिस दिन उनकी शादी है ना, बारात वाले दिन वो गाड़ी तैयार होके वहां पर आप उनके घर जाएंगे और वहां पे आप डिलीवर करेंगे। लेकिन आपने उनको बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ओके। एंड लिटरली वी डिड दिस एक्सरसाइज, वी हैव कंप्लीटेड। हमने वो गाड़ी सिविक लेटेस्ट मॉडल, जिस दिन उनकी बारात थी, उनको
वहां पे पहुंचाई। मैं जब वहां पर गया तो मुझे पता चला वो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गए हैं, तो मैंने सीईओ को फोन करके बताया कि सर वो तो नहीं है। कहते गो ब्यूटी पार्लर जाओ। मैंने कहा चलेगी, मैं ब्यूटी पार्लर हम गए वहां पे। तो वहां पर हमने सीएफओ को वो गाड़ी डिलीवर की और फिर उसकी पिक्चर्स हमने सीईओ को भेजी। आप यकीन माने सीएफओ वाज सुपर डुपर एक्साइटेड। कहते हैं यार ये क्या है? हमने कहा सर सीईओ ने कहा है कि ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। वो दिन गया और आज का दिन गया, इस बात को 10 साल हो गए। सीएफओ ने जॉब नहीं छोड़ी, ना उन्होंने कहीं अप्लाई किया। एक आपके जेस्टर ने लाइफ टाइम उस बंदे को विन कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एम्प्लॉय के साथ किसी इदारे में उसका मोबाइल चोरी हो गया पर्सनल लेवल पे। तो क्या किया, उसके जो सेठ साहब हैं वो फेस सेंटर ले गए उस एम्प्लॉय को। उसे कहा यार हमने ना कुछ इक्विपमेंट खरीदना है तो चलो। मैंने कहा ठीक है। वो बंदे ने कहा ठीक है चले। वहां पर चले गए। तो फेस सेंटर की किसी शॉप पर जाके उस एम्प्लॉय को कहा कि यार तुम्हारा मोबाइल कल चोरी हुआ था, ये 60-70 हजार रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाओ और अपनी पसंद का मोबाइल ले लो। तो आई मीन वो ये सारी चीजें उसने की और वहां पर द एम्प्लॉय वाज एक्साइटेड। अच्छा ये सारी चीजें मैं फिर आपको कहूंगा कि क्योंकि हम लोग देसी हैं, हम लोग ना जो हमें प्यार मिलता है तो हम प्यार को फिर डबल ट्रिपल करके वापस देते हैं। तो हम ना जज्बाती कौम है, पाकिस्तानी कौम जज्बाती है, इमोशनली जल्दी अटैच हो जाती है। माजरत के साथ एक स्टेटमेंट में देने लगा हूँ, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, लोग इदारों के लिए काम नहीं करते भाई, लोग बॉसेस के लिए काम करते हैं, लोग इंसानों के लिए काम करते हैं। कोई कहता है ना कि मैं नेस्ले में काम करता हूँ या मैं फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वो बॉसेस के लिए काम कर रहे होते हैं। आप देखें जिस जगह पे बॉस और नीचे सबऑर्डिनेट का रिलेशन ठीक नहीं होगा, सबसे ज्यादा लोग वहां पर छोड़ के जा रहे होंगे। तो मैं फिर एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो है यहाँ पर हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस कि जी हम सिर्फ ये पॉलिसीज नीचे इम्प्लीमेंट करते जाएं और वो बेचारा उसको ऊपर उसको कहे कि जी ठीक है जी ऊपर से आ गया, अब इसको नीचे जो है ना वो करे। ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एक्टिविटी चल सकती थी, अब नहीं है क्योंकि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, उनको पता चल गया है कि यार अब बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और टेक में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो हमें बहुत सोच समझ के और देख के इन चीजों पे जो है ना वो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगेन मैं इन दैट ये कहूंगा कि वी हैव टू डेवलप सिस्टम्स, बेस्ट सिस्टम्स फॉर आवर एम्प्लॉयज। उनकी जिंदगी हम सुकून में करें और मीनवाइल अगर वो उनको ये लगे कि शायद हम अकाउंटेबल हो रहे हैं, नहीं, हम ऐसे सिस्टम लेके आए जिसपे एम्प्लॉय डेवलप कर सके और हम उसको सपोर्ट करें पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे कि भाई वी आर सपोर्टिंग यू कि तुम 2 साल लगा लो एमरेट लैब में, 3 साल लगा लो इन्वोजोन में, लेकिन जब बाहर जाओ तो वो लोग यार कि इन्वोजोन से बंदा आया हुआ है। क्यों आज बड़े बड़े इदारों से लोग कहते हैं यार वो फलां सिस्टम से ले लो, I2C से ले लो, नेटसूट से ले लो। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट किया हुआ है। लोग रिटेंशन, आप देखो उनकी रिटेंशन कितनी जबरदस्त है, लोग नहीं छोड़ना चाहते आर्मी सोर्स से, लोग नहीं जाना चाहते, आप उनको डबल ट्रिपल ऑफर कर ले, नहीं आने चाहिए। तो वी नीड टू हैव द मैकेनिज्म, रिटेंशन पॉलिसीज की भी हमें वो लानी पड़ेंगी ताकि एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा रुक सके किसी भी इदारे के अंदर। तो ये हमें, मेरा ख्याल है कि एज HR प्रोफेशनल, एज बिजनेस लीडर इसको जरा थोड़ा सा और इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। जी फिल्जा, ओवर टू यू। Okay, so guys, so far this has been the most informative session and हम लोगों को बहुत अच्छे जो है वो आइडियाज सुनने को मिले, हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस, एक्चुअली हमारे पास इसका ज्यादा ही कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे सुनने को मिले। हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, उन्होंने वो स्ट्रेटेजीज बताई विच वर्क फॉर अस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वो चीजें हैं जो शायद अगर हम देखें तो कोविड अभी कहीं नहीं जा रहा। ये वही बात है, कभी वर्क फ्रॉम होम होगा, कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। So these ideas are practically applicable for every one of us, कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। स्पेशल थैंक्स टू द गेस्ट स्पीकर्स जिन्होंने इतना टाइम निकाला, स्पेशली ऑन सैटरडे, एंड दे केम फॉरवर्ड एंड दे गेव देयर इनसाइट्स ऑन दिस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।
आई एम रियली थैंकफुल टू हसन कि उन्होंने हमारे साथ इस चीज के ऊपर कोलैबोरेट करने को एग्री किया एंड ही वेंट फॉरवर्ड कि ठीक है लेट्स डू दिस. एंड स्पेशल थैंक्स टू सर फुरकान बिकॉज उन्होंने ये सारे इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट किया. बिकॉज डेफिनेटली अगर हमें पीछे मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो तो यू कैन नॉट कम फॉरवर्ड टू सच थिंग कि आप ये सारा कुछ करें. So a special thanks to InvoZone, a special thanks to Sir Furqan and definitely Hassan for like the pep talk side कि आपने इन चीजों को हमारे साथ मिलके collaborate किया and it was actually nice having you here. हमारी जो InvoZone की marketing team I would like to especially thanks Nail and Nabil. They did a great job. उन्होंने बहुत effort लगाई है इस सारे event को successful बनाने के लिए. सारा बैठ के टेस्टिंग एंड ऑल एंड ये दोस्त साद एज वेल साद ने बड़ी एग्जैक्टली स्क्रिप्ट उसने बड़ा अच्छा बनाया. हां बिल्कुल. एंड मूविंग टुवर्ड्स के एचआर डिपार्टमेंट की फिर हम बात करते हैं. एंड बाय द वे आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द ऑल Fiza, I want to add, I would like to thanks to the all participants. I mean, they all were amazing and superb. The energy level was wonderful. Particularly, we talked about Fizan Mahmood, क्योंकि मैं तो फिजान के साथ दिन भी चलता रहता है और समटाइम तो हम क्योंकि सारी चीजें एचआर की चल रही होती हैं तो फिजान हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. बाकी सबने भी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया. दे ऑल वर अमेजिंग एंड सुपर्ब. और I'm sorry, I have asked a bit tough questions, a bit controversial questions, or real-time questions. So मैं माजूर चाहूँगा किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल भी जो थी वो मकसद नहीं है क्योंकि ये रियल टाइम सिचुएशंस हैं जो कि हमें आपसे पूछनी पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली फील हैप्पी कि सब लोगों ने अपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए. किसी ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं की एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड स्पेशल थैंक्स टू फुरकान भाई, द CEO ऑफ InvoZone. बहुत अच्छा सेशन रहा. टीम डिड रियली वेल. नबील, नाइल, साद, फिजा, ये पूरे सेशन के पीछे बहुत मेहनत है. हम रात को भी लास्ट टाइम हमारी 2 बजे भी डिस्कशन हो रही थी, 4 बजे थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा. ऑल वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच अगेन. Yeah, thank you so much everyone for coming forward. Inshallah we'll be having such sessions in the future as well. It has been so good so far, so definitely we'll plan out something. And thank you so much. Thank you so much InvoZone team. Thank you so much everyone for joining us. Allah Hafiz.